Good morning to all dear participants. Hello. Good morning, Mangal sir. Good morning, sir. Good morning. Sir, hello participant. Today is the last day of short-term training perspective optimization technique. That have enjoyed and learned the honorable experts has delivered their lectures. Hello. So, dear participants, good morning to all. Today's lecture will be delivered by our honorable guest, expert sir, Dr. Mangal Singh sir. He is from Nirma University. You know him very well. Yesterday he has delivered his lecture on optimization techniques, and I request Dr. Mangal sir to start the session. Please, sir.
Good morning, Ajay sir, and good morning all participants. I hope I am audible now. Yes, sir. Yes, sir. मॉर्निंग सर। Okay. Very good morning, विकी जी कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया सर। Okay. So let's start our session. I think the screen is shared now. Yes, sir. Okay. So in today's talk, what I had planned yesterday also I told you. In today as a talk, we'll discuss about the first thing, that is the introduction to meta heuristics algorithms. So in this session, I'm going to cover the basics, fundamentals of meta heuristics. What do you mean? Somebody's mic is on. Please switch off. Vicky sir, please check somebody's mic is on. Yes, sir. Some background noise is there. Please mute all the participants. Yes, sir. It is okay, sir. Yes, it's okay now. Yes, sir. Please. So the first session will be mostly about the introduction to meta heuristics, and after that I will discuss about the some of the meta heuristics algorithms, the basics of some of the algorithms. Yesterday I told you some brief idea about some of the nature's pad algorithms kind of thing. And after that, I'll discuss about one very interesting algorithm that is called harmony search algorithms, right? So I will see one by one, and then if the time permits, I'll discuss with some paper related to harmony search algorithms. What are the different variants of that algorithm is available, and then finally we'll conclude the today's session with how to apply a particular algorithm for your problem. Then the next part will be how to convert your work in the form of some journal paper, right? And when sorry again, mic is on. किसी का mic अभी चालू है. Please switch off. Please mute all the participants. If somebody wants to say something, then he or she can just unmute and tell. Yes, sir. सबको ऑफ कर दीजिए, सारे लोगों को ऑफ कर दीजिए जितने भी हैं, each and everybody, including the admin also. So background में अभी भी कुछ हल्का सा आ रहा है, I don't know क्या चीज का है, but something is there. So that's all about the today's session, right? So let's start with the first session with introduction to meta heuristics, right? It's a very common word, and yesterday just we discussed about what do you mean by the meta heuristics, what are the fundamentals and all. So the first thing, that is how these name comes, kahan se aaya ye, kaise aaya. So basically that meta is a Greek word for upper level methods. Okay. Yesterday we discussed about some kind of simple optimization, then hard optimization, then heuristics optimization, and after that meta heuristics will come. So obviously the meta heuristics, you can consider it as upper level kind of method, right? And one more thing, Vicky ji, if you are facing any issues with the audio or some kind of connectivity, just let me inform, or if some disconnection will be there, just call me, right? So मैंने सर सभी को अनम्यूट कर दिया सर, सभी को पता नहीं है नहीं वो ठीक है, एक कहीं से कुछ एक ऑन लग रहा है. आई थिंक आपको भी बैकग्राउंड में कुछ हिस साउंड आ रहा होगा. यस सर, यहाँ से नहीं आ रहा है सर, यहाँ तो ओके लग रहा है मेरे को. ओके ठीक है, और मेरे तरफ से अगर कुछ डिस्कनेक्ट हुआ तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा. हाँ यस सर, श्योर सर, जी सर. Then the second word comes, that is the heuristics. Heuristics comes from the Greek word, that is the heuriskin, right?
And in Greek, the heuristic means art of discovering the new strategy to solve the problems, right? Means whatever solution you are getting, how can you discover the new strategy? How can you apply the new strategy to solve your particular problem, which you are taking as a optimization problem, right? So that's about the term meta plus heuristics, right? And it is basically exact and approximate method. Means maybe you will get the optimal solution or you will get the suboptimal solution, right? So if you're talking about the exact meta heuristics algorithms, so in mathematics, that is the linear programming, then integrated programming, non-linear programming, differential programming. So these kind of methods you'll consider it as a exact programming. Then now when you're talking about the approximate kind of thing, then here comes the concept of heuristics. Yesterday we discussed about this thing, what the heuristics is and how it will work, right? And then again, meta heuristics can be used for two different kind of problems. Again, yesterday in the basics of optimizations, I told you about the term combinatorial and what do you mean by the constraints, right? So meta heuristics can be used for the combinatorial optimization problem. And the combinatorial optimization problem is a kind of problem which will basically provide you a finite solution space. I hope you remember the yesterday's session. So when the finite solution space is available, which will be or which can be countable, right? Which we can count, then it comes under the category of combinatorial optimization problem. And when we are talking about the constraint programming problem, then in that case, it can be used for the scheduling kind of problem, right? The people of mechanical and civil, they I think know about what kind of machine scheduling and something are there. I'm basically not from the background of mechanical, so I don't know most of the things about that scheduling thing. But basically, scheduling is about you can plan something to do, right? So that's what the scheduling is. And basically, in that constraint programming problem, the declaration of the variable is basically a compact kind of thing, right? So since for a particular optimization problem, you are having so many kind of constraints, so many kind of variable. So when you will consider the constraint programming problem, so and if you are using the meta heuristics, so that declaration of the variable part will be compact. So you can see understand as a USP or advantage of the meta heuristics, right? Now the very important thing, that particular slide, why I'm putting here, because whatever we are studying, we need to understand first why. What's the significance of using the meta heuristics, right? So here we are talking about why we are using the meta heuristics as an optimization solution, right? So let's see one by one what's the need of the meta heuristics. So the first part says that what if, just create a question in your mind, what if the objective function can only be simulated and there is no accurate mathematical model that connect the variables, right? What does it mean? That suppose you are simulating a particular problem using an objective function, right? And if you are not getting a particular mathematical model, right? You are not getting a particular solution which will connect all the variable, which will solve the optimization problem, right? So it says that the maths and constraint programming needs exact maths formulation, therefore cannot be applied, because when you are talking about the mathematical modeling, so until and unless you are not converting your particular problem with some kind of mathematical modeling, I hope you are aware of this term mathematical modeling, right? So until and unless you are not converting your problem into mathematical model,
then you won't be able to solve that particular problem, right? So the mathematical modeling problem is, mathematical modeling is a very important thing as far as any kind of objective function is concerned, right? Then the second thing is large solution space, because particularly for engineering and science application, when you want to solve some problems, then you may have a very large solution space. I hope you remember the term solution space, right? Whatever the possible solutions we are having, that is called the solution space. And in that solution space, what is the exact solution, what is the optimal solution we want, that is called the finite solution. Okay. So for example, again, the TSP, that is traveling salesman problem, right? So 5 cities may have 120 solution, right? So how to solve it? It will be factorial 5, that is 5 multiplied by 4, 3, 2, 1. And similarly, suppose he travels, or he covered the 10 cities, then the total solution will be approximately 3.6 million. 75 cities if he covered, then it is approximately 2.5 into 10 to the power 109 solution. So you can understand that when you are calculating the minimum distance, and at least that particular person has visited at least that place with the minimum distance, and if the total solution space is around this or that, so it is very much difficult to solve it. And yesterday we were also talked about the computational complexity of the algorithm. So it will take so much amount of time, and it is very much difficult to, although you will get the final or finite solution, but it is very much difficult to optimize this thing with this much amount of large solution space. That's what the issue is, right? And here again, one second example is there where you can just, I was talking about the machine job scheduling. What's the exact meaning of that? I hope the mechanical people will understand this. But because I have taken some of the examples from mechanical also, because I think in the participant size that the people are from very diversified backgrounds, and so many multidisciplinary peoples are there, probably from science background also. So that's why in meanwhile and in between, I am considering some of the examples related to the other branches. Maybe it is not clearly understandable by me, but the people who are from that background, they will be able to understand this particular thing, right? So when you're talking about the machine job scheduling, then in this process, suppose n jobs are there, and for m identical machine, I hope it means that the m machines are there, and that machines will do the n jobs at a particular point of time, right? So when you are calculating the solution space, then it will be around m to the power n, right? So when you consider it as an optimization problem, the basic issue is with complexity of the algorithm, right? And this particular kind of complexity comes in the two categories. Number one is time, and second one is space. How much time it will take, right? Because if the solution space is very large, then the total processing time will be higher, right? And obviously we are talking about the solution space. So if the solution space is very large, then overall your complexity of the algorithm, calculation time, and overall the optimization will be very complex. So that's what the thing. And second one is the time constraint. Time is the number of steps required to solve a problem. Yesterday also we were talking about one term that is called iteration. So iteration is directly or indirectly related with the number of steps required in a particular optimization problem, right? So that is the thing, that is the need of the hour, for which we are using the meta heuristics algorithm. Roughly, if you are considering as a summary of this particular slide, so the most important thing is, if the solution space is very large, right? If your optimization problem is very complex with respect to the time and the solution space, then you can solve it with the meta heuristics optimization algorithms, right?
And the meta heuristics optimization is the need of the hour, particularly for the engineering and the science applications, or in the area of or research of engineering and science, right? So that's about why the optimization algorithm. Yesterday, again, I talked about the complexity part. I hope you remember. That is the big O notation. So whenever you are considering any kind of optimization, then you need to consider the computational complexity of that algorithm. Right? Without computational complexity, you cannot say that algorithm will performs better or not, right? So most of the part I had covered in the previous class. That is, if some function is there, then we need to calculate, or we need to express the computational complexity in terms of the big notation O. And here the capital O stands for the order of that particular problem, right? And yesterday I think you remember that I discussed about what do you mean by that. Oh, suppose some function is having the term in the form of, for example, fn is equal to 0.1 x cube plus 0.9 x square plus 0.2 x, right? So what will be the order of this particular polynomial? It will is equal to 3, right? So that is the computational complexity, and it will be represented like this. So whenever you will see, or you will study some paper related to complexity of the optimization algorithm, so you will see these kind of big O notation. Okay. And for computer science people, some of the examples are maximum spanning tree, max flow network, etc. It is directly related to data communication and networking subject, right? So that is the complexity of the algorithms. And also yesterday I talked about that NP problem, NP hard problem, NP complete problem. So I'm not going to cover this particular point today. Then let's talk about the basics of meta heuristic. What's the idea, and what are the various methods that are available in the meta heuristics optimization method, right? So the overall idea is to search the solution space directly. Whatever solution space you are having, directly you can search that, right? No mathematical model, only a set of algorithmic steps and some iterative methods, right? That steps and iteration are almost similar to each other. So यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई भी mathematical modeling propose नहीं करते, right? कुछ algorithms के steps होते हैं, उस algorithm के steps से we can find out our expected solution directly from the solution space. So just remember this particular line, why meta heuristics, right? That will provide or that will give the option to search the solution space directly. No mathematical modeling is required, right? Then how it is possible? कैसे हो सकता है? So there are some categories, there are some methods through which we can do that, right? And you can consider it as a types of meta heuristics algorithm under the different category, how it works, right? On the basis of you can say the specifications. Okay, so the first one is called trajectory based method. Trajectory based methods are also called the single solution based method. Obviously, if you want to solve some problem, then the best thing, or the feasible solution should be the single solution. आपने अगर कोई इक्वेशन सॉल्व किया और अगर उसका लास्ट में आंसर 2, 5, 10 समथिंग कुछ एक सिंगल वैल्यू आ रही है, दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन बिकॉज यू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. But if you are getting
the output will come in between 2 to 5, या फिर 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है. So that's called the multi solution kind of thing, right? So single solution अगर आपको मिल रहा है, that will be the best thing, and that is called the trajectory based methods, right? So how to do that? What is the fundamentals of trajectory based methods? So in that method, the search process is characterized by a trajectory in the search space, right? Now you may ask, sir, what do you mean by the trajectory? Trajectory means whatever the solution space you are having, you can directly connect with the solution and take that particular solution and consider it as a variable in your optimization problem. So that's what the meaning of trajectory here, right? So it is also written there. It can be viewed as an evolution of a solution in the discrete time of a dynamical system, right? मतलब evolution का word हमने कल discuss किया था. What do you mean by the evolution? At first, you can say that is my solution, right? Suppose something A is my solution, okay? Then you will search the neighboring space, right? And when you will search the neighboring space, then you will calculate which particular neighbor will give you the optimum solutions. Suppose here B, C, and D is there, and if B is giving you the optimum solution, then B will come here, and that node A will be converted into B, right? Again, then B will see what is the optimum solution, and so that is called the evolutionary method, right? The current solution will be modified or changed in accordance with the whatever solution you are having as in relation with the neighborhood. Okay. Now, these are some methods which is called trajectory based methods, right? I hope you heard some of the names: taboo search, simulated annealing, iterative local search, variable neighborhood search, and guided local search. Just give me a minute. Yes. So that is called the trajectory based methods. In next hour, I'll discuss that methods in brief. What are these methods? How that optimization algorithm works? How to write the pseudo code for any kind of optimization algorithm? That I'll discuss with you, right? The second part is the population-based methods. Fine. So it's very common and very interesting also, and very much used in engineering and science applications. So what do you mean by the population, right? जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं जनसंख्या. So population based methods में क्या होता है? We are considering the population as a set of solution, right? So every step of the search process has a solution. मतलब जो आप program लिखेंगे, in every step a population is there. That means a set of solution will be there. You will pick up a solution and then modify it, right? So that's what the population based method. Again, it is coming under the category of evolutionary based optimization algorithms, and it can be viewed as an evolution of a set of a solution in the discrete time of the dynamical system. The types or the examples of the population based methods are genetic algorithms, swarm intelligence. Swarm intelligence is a very important and common algorithms which we are using, still we are using, and we had already used to solve so many kind of problems. And a very popular optimization is ant colony optimization, bee colony optimization. Bee colony में भी बहुत सारी categories हैं. Artificial bee colony है, modified bee colony है. Then these scattered search algorithms, you can note it down, these names of the algorithms are there. So that is the example of the population based
methods, right? Then a very interesting or very important optimization methods are hybrid methods. Hybrid method means what? So, just give me a minute. Just give me a minute, right? Sorry. Okay. So hybrid method. So hybrid method means many researchers working on the you can say the whatever the pros or whatever the advantage of one optimization algorithm is there, they can take that particular part of that algorithms, connect it with some other algorithms, and then modify it. So that kind of you can say the modification is called the hybrid optimization algorithm. Like, suppose you can consider it as genetic algorithm based bee colony optimization, GABCO, you can say like that, right? So what do you mean by this? That particular optimization algorithm will have the essence of genetic algorithm as well as bee colony, right? Similarly, like this, taboo search based simulated annealing algorithms, right? TSSA. So you will find so many kind of hybrid optimization methods, and you will see so many research papers are there, and it is basically giving the effective or productive solutions with respect to any kind of optimization problem. Then here comes the another category, which is called parallel meta heuristics. So in parallel meta heuristics, I hope computer science people are aware of the term parallel computing or distributed computing. In rough sense, I can tell you about the parallel computing is that suppose there are four things or four objective, you can say, you want to achieve in your problem, in your optimization problem. So if in optimization, if you are considering it parallelly, simultaneously, if you are solving all these four problems, then it is called the parallel computing, right? And for this, you need a kind of computing mechanism that is called GPU, graphical processing unit. I don't know, maybe computer science people are aware of the term, and it comes under the category of high performance computing. And yesterday I told you the example of that Google Colab. Even मुझे कोई आंसर नहीं मिला था कि somebody is using it or not. But if some person is working on the machine learning or deep learning kind of technique, then the Google Colab is the platform where you can run your Python code, right? So जब आप ये Google, आप सिंपल जाके Google में Google Colab सर्च कीजिए, Google Colab में लिंक आएगी, वहां पर जब आप एंटर करेंगे, then you will see one interface, और उस इंटरफेस में सपोज आपको कोई पाइथन प्रोग्राम रन करना है, तो ऊपर में एक ऑप्शन होता है इनिशियलाइज. आप इनिशियलाइज में जब क्लिक करेंगे, देन गूगल विल प्रोवाइड यू अ सर्वर विथ अ हाई रैम कैपेसिटी एंड विथ अ पर्टिकुलर क्लाउड स्पेस. सो सपोज आप जो लैपटॉप या पीसी यूज करते हैं, इट इज प्रोबेबली हैविंग 4 GB और 8 GB ऑफ रैम. But when you want to connect or when you want to run that particular program through the Google Colab, then it will provide you maybe the 25 GB or 50 GB of RAM and maybe some amount of the cloud space. Okay, so I think अगर आपको MATLAB का थोड़ा बहुत आइडिया है, तो ऑनलाइन MATLAB में भी ऐसा ही कुछ होता है कि अगर आपको
कोई प्रोग्राम रन करना है तो आप वो मैटलैब रैम्प पे जाइए, ऑनलाइन मैटलैब पे, वहां पर उस प्रोग्राम को रन कीजिए एंड मैटलैब का जो सर्वर होता है इट इज हैविंग a high capacity of the RAM and ROM, so it for particular point of time it will give you the space and it will give you the RAM and simultaneously जो आपका लैपटॉप में 2 घंटे में आपका प्रोग्राम रन होगा it will be available at 10 or 20 minutes only, right? So that kind of facilities are there and that comes under the category of parallel and distributed computing. Okay, so ये जो computation or technology है, when you are connecting it with the optimization, then it is called the parallel meta heuristics. यहाँ तक किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है, then I can explain. I will be happy to answer. कोई सुन रहा है, नहीं सुन रहा है? If anybody is there, just at least say yes, no, anything. Am I audible? Yes, sir. Actually, all mics are muted. अच्छा, नहीं वो ठीक है सर, बीच में if somebody want to ask something, he or she can unmute and ask and then mute their mic. Okay, sir. Okay. They will. I think they will ask their questions in the end of your session, sir. Okay, maybe. Done. Okay. Oh. Okay. Thank you, sir. So let's continue with the history of the meta heuristics. Why I am putting this particular slide? Because earlier it was not very much popular, right? In the year of 1965, the first evolution strategy was discussed and developed, right? And I hope you remember, or I hope you know, you're knowing, the first genetic algorithm was discussed in the literature in the year of 1975. Then after that, a very popular algorithm, simulated annealing, comes 83. Then taboo search comes in 86. Then the ant colony optimization developed in the year of 1991. And after that, so many different algorithms are there, and daily, if you'll follow the Scoopus, if you follow the Google Scholar, you will see approximately daily you will see some different kind of optimization algorithm for a particular problem, right? So that's about the history of the meta heuristics algorithms. And what is the goal? Ultimately, why meta heuristics? That's what we discussed, right? Because it don't needs any kind of mathematical modeling, as we are told in the previous slides, right? Only algorithmic steps are there, and it will provide you the feasible solution. Only we need to improve it, right? And suppose you are considering a greedy solution. Yesterday I talked about the greedy solution. Greedy solution means without considering the other solutions in the solution space. If you are considering a neighborhood solution without any reason, that is called the greedy solution. मतलब random pick करना है आपको without considering anything. That is called the greedy solution, and that kind of optimization algorithms are called greedy optimization. Fine. So ultimately, the final goal is to find out the best solution. And if you remember, again, we talked about the stopping criteria. कहाँ पर जाकर आपको एल्गोरिथम को रोकना है? Again, that is the very important thing, right? So stopping criteria decide करना is also a important thing in any kind of optimization algorithms. Then diversification and intensification. I'm not going to discuss these typical terms. Just note it down somewhere. क्या होता है और कैसे होता है? Because जब आप पेपर पढ़ेंगे, then you will have to write these kind of terms, right? So ultimately, the meta heuristics is basically consider for the trade-off between the quality and time. मतलब कि अगर आप टाइम ज्यादा लेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इटरेशन ज्यादा होगा, देन इट विल गिव यू द बेस्ट क्वालिटी. बट अगर नंबर ऑफ इटरेशन ज्यादा होंगे, टाइम ज्यादा होगा,
then you won't consider it as a good solution, right? Yesterday I told you about the implementation part of that. So practically it will not be implementable. So you need to have some kind of trade-off. आपको वो देखना पड़ेगा कि क्वालिटी भी ठीक ठाक हो और टाइम भी कम लगे, राइट? सो लाइक जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर एप्लीकेशन सच एज द डिजाइन डिसीजंस ऑन हाई क्वालिटी सॉल्यूशन व्हिच टेक्स मोर टाइम, फॉर एग्जांपल हाई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, and for controlling or operational decision where quick and frequent decisions are taken, looks good for the enough solution like scheduling, वो machine scheduling की जो हम लोग बात कर रहे थे. तो जहां पर ज्यादा टाइम आपको लग रहा है और आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए, देन यू कैन कंसिडर इट. जहां पर आपको कम टाइम में ऑप्टिमम सॉल्यूशन चाहिए, देन अगेन यू कैन कंसिडर इट. डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग. Then the trajectory based methods are heavy on the intensification, while population based methods are heavy on the diversification, right? ये दो अलग अलग स्ट्रेटेजी है. तो ट्रेजेक्टरी बेस्ड मेथड्स जो है वो इंटेंसिफिकेशन के टर्म्स में ठीक ठाक होता है, और जो पॉपुलेशन बेस्ड मेथड्स है वो आपका डाइवर्सिफिकेशन के टर्म्स में इट विल प्रोवाइड यू दी गुड सोल्यूशन, राइट? नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन पार्ट. ये मैं आपका नेक्स्ट आवर में डिस्कस डिटेल में करने वाला हूँ. यहाँ पर जस्ट आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि व्हाट आर द टर्म्स, जस्ट रिमेंबर द नेम्स. सो द वेरी कॉमन और वेरी इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड नेचर स्पायर्ड एल्गोरिथम्स, राइट? नेचर स्पायर्ड और स्वार्म इंटेलिजेंस. नेचर स्पायर्ड और स्वार्म इंटेलिजेंस is a class, is a, you can consider it as a, you can category of the meta heuristics, and you can compare it with the non-nature inspired simulated non-nature inspired algorithms like the simulated annealing, and you can consider it for the physics kind of applications. Fine. Then अगर आपका memory usage के terms में if you want to classify something, then taboo search is the best algorithm, and you can compare it with the memoryless methods like local search or simulated annealing. Fine. Then अच्छा, remember यहाँ पर ये simulated annealing और simulated annealing for physics, again these two are the two different kind of आपका optimization algorithms. Then the deterministic algorithms में the taboo search, local search versus the genetic algorithm और simulated annealing algorithms. Deterministic को हमने कल डिस्कस किया था कि the same initial solutions will be lead to the final solution. जो starting में आपने लिया वही आपको final solution देगा. But stochastic में क्या होता है कि that same initial solution will lead to the different फाइनल सॉल्यूशन. मतलब कि एक आपने जो स्टार्टिंग में सॉल्यूशन लिया, इट विल गिव यू द डिफरेंट फाइनल सॉल्यूशन, और जिसमें से कि कुछ जो है वो आप रैंडमली चूज करते हो ऑन डिपेंडिंग अपॉन द रैंडम वेरिएबल. सो रैंडम वेरिएबल का मैंने डेफिनेशन आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, इट इज नाइदर रैंडम नॉर वेरिएबल. सो आप जो है गेस करते हो कि क्या होगा, क्या आउटपुट होगा, एंड अकॉर्डिंगली यू विल चूज सम काइंड ऑफ सॉल्यूशन. Then the population based methods will manipulate the whole population of the solution, right? अब ये कैसे काम करता है, that we will see. population based method में कौन कौन सी कैटेगरी है, और population based method if you compare this method with the single solution based methods, it will manipulate the single solution. Just now we discussed that. And then again the different algorithms you can compare it with iterative and greedy, right? Iterative में क्या होता है, it will start with the complete solution, right? Transform at the each iteration. But जो greedy algorithm होता है, it will start with the empty solution. Starting में कुछ भी नहीं होता है, and it won't consider. See difference क्या है iterative और greedy में, कि iterative जो है
वो सॉल्यूशन स्पेस में आपके जितने भी ऑप्शंस होते हैं, जितने भी डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, इट विल कंसिडर ऑल सबसे पहले वाले स्टेप में, और उसके बाद यही लिखा हुआ है दैट स्टार्ट विद द कंप्लीट सॉल्यूशन, और उसके बाद फिर वन बाय वन इट विल सी कि इससे ये बेटर है, ये बेटर है, ये बेटर है, कौन सा बेटर है, एंड वन बाय वन वो सबको सर्च करता है एंड अकॉर्डिंगली इट विल गिव यू द फाइनल सॉल्यूशन, राइट। बट ग्रीडी में क्या होता है कि ग्रीडी विल स्टार्ट विद द ब्लैंक, वो रैंडमली एक कोई सॉल्यूशन लिया विदाउट कंसिडरिंग कि उसके नेबर में यहाँ पर कौन से अलग अलग नोड्स अवेलेबल हैं, इट वोंट कंसिडर एनीथिंग एंड रैंडमली इट विल पिक अ न्यू वन, राइट, अकॉर्डिंग टू हिज नीड, और उसके हिसाब से वो चूज करता है, राइट। सो दैट्स कॉल्ड द ग्रीडी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्लाइड है जो कि हमारे इंजीनियरिंग और साइंस एप्लीकेशंस में आता है। मेटा ह्यूरिस्टिक्स यूज कब करना है हमको, बिकॉज हर एक प्रॉब्लम के लिए आपको मेटा ह्यूरिस्टिक्स एल्गोरिथम्स यूज करने की जरूरत नहीं है, एंड एज वी डिस्कस्ड अर्लियर थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, इट्स नॉट इजी काइंड ऑफ थिंग, right? And in terms of the complexity also, meta heuristics algorithms are more complex as compared to normal heuristics or simple kind of optimization algorithms. So it may possible कि बड़े simple तरीके से वो solve हो जाए, but आप अगर meta heuristics use करेंगे so it may be a complicated one. So the most important thing is that कि when to use the meta heuristics algorithms, right? So कब use करना है इसको? So if one can use the exact methods, then do not use the meta heuristics. That's what I am talking about. अगर आपको exact method से direct solution मिल रहा है, right? Exact methods कल की क्लास में डिस्कस हुआ था। Exact method में क्या होता है, आपने अप्लाई किया, directly you are getting the solution, right? Simplest way से। So मेटा ह्यूरिस्टिक्स वहां पे यूज करने की जरूरत नहीं है, राइट। फिर ये पी क्लास प्रॉब्लम मैंने आपको कल बताया था, दैट इज पी स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, सो दैट पी क्लास प्रॉब्लम with the large number of solution, then p time algorithms are too expensive to implement. So अगर p क्लास का कोई प्रॉब्लम है जिसमें कि बहुत सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, तो इनको इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट होता है, देयर यू कैन यूज द मेटा ह्यूरिस्टिक्स. Then for dynamic optimization, I hope you understand the static optimization and dynamic optimization. So dynamic optimization और real time optimization में meta heuristics जो है it will reduce the search time, right? Ultimately see, हम लोग दो terms की बात करते हैं, just we discussed about that, time complexity and solution space complexity, ठीक है, और दोनों आपस में interrelated ही है. So ये जो है मेटा ह्यूरिस्टिक्स टोटल सर्च टाइम को रिड्यूस करता है और इट विल प्रोवाइड यू द गुड इनफ feasible solutions. So that's what the need for using the meta heuristics. NP hard problem मैंने आपको कल बताया था, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल हार्ड प्रॉब्लम, NP हार्ड प्रॉब्लम कल लास्ट सेशन में आखिरी में डिस्कस हुआ था. सो अगर, और जनरली इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ NP हार्ड प्रॉब्लम. सो फॉर NP हार्ड प्रॉब्लम इट विल गिव यू a good solution, right? Even a moderate size of problem, it will give you a good solution, right? Then the problems where the objective function is a black box, right? Black box का क्या मतलब होता है कि आप उसको सिमुलेट तो कर रहे हो बट आपको कोई प्रॉपर उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन नहीं मिल रहा है या प्रॉपर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, राइट? सो इस तरीके के मतलब सब चीज अनसर्टेन है, इट्स नॉट डिसाइडेड. ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है कि ये मेटा ह्यूरिस्टिक से सपोज ये आउटपुट आपका जो मिल रहा है x और आपका कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ब्लैक बॉक्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन fx. सो इस तरीके से आप जो इसको क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म. तो इस तरीके का फीडबैक मैकेनिज्म अप्लाई करके यू कैन गेट द सॉल्यूशन थ्रू द मेटा ह्यूरिस्टिक्स एल्गोरिथम्स, राइट? सो ये एक है. देन हाउ टू इवैल्यूएट द रिजल्ट, राइट?
सो अल्टीमेटली आपने अप्लाई किया एल्गोरिथम को। अब मेटा ह्यूरिस्टिक्स एल्गोरिथम के अप्लाई करने के बाद व्हेन यू आर गेटिंग द आउटपुट, व्हेन यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स, सो कैसे इवेल्युएट करेगी वट एवर वी आर गेटिंग दैट इज एक्सपेक्टेड और नॉट, राइट। तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज द बेस्ट मेटा ह्यूरिस्टिक्स अप्रोच। It does not apply, it does not exist for any problem. No proof of optimality exists and you don't care for one either. इसका मतलब ये है कि सबसे अच्छा जो अप्रोच ये है कि ये किसी के लिए भी फिक्स नहीं है, मतलब इट इज फ्लेक्सिबल, यू कैन मॉडिफाई इट, यू कैन चेंज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। दूसरा, a heuristic approach designed for a problem A does not always apply to problem B. It is a context dependent. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये मैं आपको एक समरी बोलूँगा ये कल और आज के टोटल सेशन की। कोई भी ह्यूरिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम A के लिए जैसा आप उसको डिज़ाइन करें वैसा ही एज इट इज़ वो प्रॉब्लम B के लिए भी काम करेगा। It is not necessary, right? प्रॉब्लम ए के लिए वही पर्टिकुलर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम दूसरे तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं और प्रॉब्लम बी को दूसरे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, और ये भी पॉसिबल है कि दोनों अलग अलग प्रॉब्लम के लिए वो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन दे। सो अगेन इट्स नॉट फिक्स्ड कि कौन क्या देगा अनटिल अनलेस आप उसको रन नहीं करते, अनटिल अनलेस कि आप उसको ट्राई नहीं करते। मैं आपको अपना एग्जांपल बता रहा हूँ कि इन माय डॉक्टरेट work we tried almost 14 to 15 kind of optimization algorithms for our problem which give the best solution। तो कुछ तो रन ही नहीं हुए, प्रोग्राम लगाने के बाद समझ ही नहीं आया कि कौन सा वेरिएबल किसके साथ मैच नहीं कर रहा, और जो रन भी हुए सो सम एल्गोरिथम विल गिव द वर्स्ट रिजल्ट्स, कि जो आपका नॉर्मल कैटेगरी में जितना आ रहा है उससे काफी ज्यादा हाई रिजल्ट आ रहा था। So ultimately we tried 14-15 algorithms and finally we conclude the thesis in that manner कि ये 3 algorithm हैं which works well in that particular area, और उसके बाद उन तीनों में से फिर उनका आपस में comparative analysis था कि इस condition में that will give you the best, in that condition that will give the better option, and finally तीनों के comparison में which one is the better among the other. So that's what the overall thesis was all about, right? So the purpose of telling you all these things is that you need to try different algorithms for your problem and just see and check which is working better, right? It's not about that कि आपने एक उठाया उसको लगाया और directly it will give you the best solution. No, it's not possible. Then the third part is the meta heuristics algorithms well designed? Does it behave well? No common agreement exists in the literature. ऐसा नहीं है कि इसको बहुत अच्छे से डिजाइन आप करके और ये हर तरीके से हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करे, जो जस्ट मैं आपको बता रहा था। किसी प्रॉब्लम के लिए कोई एल्गोरिथम कुछ सॉल्यूशन देगा, दूसरा एल्गोरिथम कुछ और ऑप्शन देगा, राइट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स, तो सबसे पहले हमको क्या चीज को देखना पड़ेगा। सो नंबर 1 इज इजी टू अप्लाई फॉर हार्ड प्रॉब्लम, राइट। दूसरा, इंटेंसिफाई, शुड बी एबल टू फाइंड द लोकल ऑप्टिमा। आई होप यू नो द टर्म लोकल ऑप्टिमा। रफली लोकल ऑप्टिमा का मतलब होता है कि जो आपका सॉल्यूशन स्पेस है उसके अंदर ही नियर बाय सॉल्यूशन अवेलेबल हो, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिफिकेशन। सेकेंड वन इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। It should be able to widely explore the solution space. That means जितने भी solution available हैं, आपका जो optimization है, it should consider most of the solution which is available in the solution space. So that is called the diversification. And the last part is the greedy solution. Generally, greedy solution जो होता है that is the good starting point. Just मैंने आपको बताया greedy solution में we will start with the ब्लैंक सॉल्यूशन स्पेस, एकदम जीरो से शुरू करते हैं, रैंडमली किसी को पिक करते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी विल सी व्हिच वन इज बेटर। सो ग्रीडी सॉल्यूशन स्पेस विल बी द गुड स्टार्टिंग पॉइंट, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम व्हिच you will consider, right?
देन इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, हाउ टू फाइंड द गुड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फिर उसके बाद आपको कंपेयर करना पड़ता है कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और वो अवेलेबल है कि नहीं है। देन यू नीड टू कंपेयर इट विथ अपर एंड लोअर बाउंड। अपर एंड लोअर बाउंड का मतलब ये है कि आपने बोला आपके प्रॉब्लम में इसकी वैल्यू जो है वो 2 से लेकर 5 के बीच में होनी चाहिए, तो 5 जो है ये हो गया आपका अपर बाउंड, 2 जो है ये हो गया आपका लोअर बाउंड। तो ये आपको कंपेयर करना पड़ता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उसके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या क्या है, राइट। और उसके बाद फिर आपको कंपेयर करना पड़ता है अदर मेटा ह्यूरिस्टिक्स मेथड से। सपोज आपने एक एल्गोरिथम लगाया टाबू सर्च, अब टाबू सर्च का जो रिजल्ट है वो एंट कॉलोनी एल्गोरिथम से बेटर आ रहा है कि वर्स्ट आ रहा है, दैट यू नीड टू कंपेयर आल्सो, राइट। उसके बाद आता है रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। तो ये सारी चीजें जो हैं, रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, इट इज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेटेड विथ द टाइम कंस्ट्रेंट्स and the overall solution space with in relation with the complexity part of the algorithms, right? और उसके बाद फिर ये लास्ट वाला जो पार्ट है, reasonable computational time between a few seconds to a few hours, इसके अंदर ही रन हो जाना चाहिए, नहीं तो आप पता चल रहा है आज आपने रन किया और 1 साल के बाद रिजल्ट आ रहा है, then it doesn't make any sense, right? Yes, that is important thing. ये मैं एक पार्ट आपका कवर अप करता हूँ, then I'll give you the break, right? So what are the main concept for implementing a meta heuristic algorithms, right? क्या क्या चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए जब आप किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हो। सो नंबर 1 पार्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। मतलब कि जो भी सॉल्यूशन है आपका वो बेसिकली बाइनरी वैल्यूज में होना चाहिए। अगर आप मैटलैब थोड़ा बहुत जानते हैं या आपने कुछ अगर काम किया है, सो मैटलैब का जो फुल फॉर्म होता है इट इज बेसिकली मैट्रिक्स लैबोरेटरी, राइट। और मैट्रिक्स लैबोरेटरी का मतलब होता है कि इसमें रोज एंड कॉलम्स के टर्म्स में आप सारी चीजें रिप्रेजेंट करते हो। अब अगर आप 0 और 1 के टर्म्स में अगर अपना सॉल्यूशन स्पेस लेके चलते हो, देन इट इज इजी टू सिमुलेट, इट इज इजी टू कैलकुलेट। दैट्स व्हाई यहाँ पर ये बोल रहा है कि द बाइनरी जो सॉल्यूशन विल बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द बाइनरी वैल्यूज, राइट। देन वेक्टर ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज, लोकेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, मतलब कि आप जो भी टर्म्स या जो भी वैल्यूज लेके चल रहे हो, मे बी कोई आपकी जो सॉल्यूशन है उसका लोकेशन कहाँ पर है, एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम आप असाइन कर रहे हो उसकी क्या वैल्यू है, उन सारी चीजों को आपको वेक्टर्ड फॉर्म में लेना पड़ेगा, राइट। देन द वेक्टर ऑफ द कंटिन्यूअस वैल्यू ऑन द रियल टाइम, राइट। तो मतलब रियल टाइम या रियल लाइन वैल्यूज जो है उसको आपको कंटिन्यूअस वैल्यू के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, एंड देन द सॉल्यूशन शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ परम्यूटेशन, राइट। तो ये सारी चीजें आपको सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के पहले कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद द ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी क्लियरली डिफाइंड, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। आपका जो प्रॉब्लम है उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप कैसे डिफाइन करोगे, मैं सेकेंड हाफ में आपको बताने वाला हूं कि जैसे मेरा जो प्रॉब्लम था, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम लिया और उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे डिफाइन किया एंड हाउ वी सॉल्व इट, सो दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विथ वन ऑफ द पेपर। एंड द कंस्ट्रेंट्स हैंडलिंग, constraints is a very important thing. Constraints are the terms which directly affect the outcome or solution of the optimization problem, right? So content handling, constraints handling के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा what are the reject strategies, कि अगर ये solution नहीं मिला then reject it, right? So keep the feasible solution and reject the infeasible ones automatically, ये आपको आपके problem में रखना पड़ेगा। देन पेनलाइजिंग, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ऑप्टिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करने के टाइम में आप एक पेनल्टी स्ट्रेटेजी भी रखते हो कि अगर इससे नीचे गया, जैसे वो एग्जाम देते हैं ना हम लोग, नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं कि आपने अगर 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक सही है और ये गलत है, देन यू विल गेट 0 irrespective of the fact कि 1 is right, but if second one is wrong then you will get 0,
तो एक होगा +2, दूसरा होगा -2, then equal to 0. So that kind of penalty strategy is also there for handling the constraints, right? So that's all about this particular session. If you are having any, it's 11:13 now. If you are having any questions related to that, just ask me. I just discussed about the basics, brief of the meta heuristics algorithm, how we can apply, what we can apply, and how to implement it, right? And in the next hour, I'm going to discuss about what are the various meta heuristics algorithms available and how it works. जो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए, नेचर इंस्पायर्ड हो गया, पॉपुलेशन बेस्ड हो गया, सो उसका स्यूडो कोड क्या होता है, कैसे काम करता है, एंड हाउ इट वर्क्स. जस्ट ब्रीफ में आपको मैं कुछ रीसेंट तो नहीं बोलूंगा, बट मोस्टली यूज्ड optimization algorithms in relation with the meta heuristics that I'm going to explain. So if you are having any questions, please ask. Ajay sir. We'll resume the session at 11:30. Yes, sir. Sure, sir. Okay. हेलो. हाँ सर, आपकी आवाज़ कट गई थी. हाँ. हेलो. All the participants, we will meet at 11:30 am. Dear participant, please confirm the submission of assignment or test. As and when you will submit, we will discuss the solution of that numerical. Only one student can submit the answer of the given test. Only one submission is there. Yes, sir. Please. Then after break, Mangal Singh sir will start at 11:30. Yes, sir. Okay.
So let's resume the session. Shall I start now, Vicky sir? Yes, sir. Please start, sir. Okay, sir. So the screen is visible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So as I told you in the first session that in this particular session, I will talk about the different types of your meta-heuristics algorithms. What are the different categories, and then we'll see some of the meta-heuristics algorithm, how to write the pseudo code, how it will work, and how we can apply it for a particular engineering optimization problems, right? So here just we'll start with the different categories of the optimization algorithms. So the first is basically based on the inspiration, right? Where from where we inspired, right? So very interesting, as I told you again and again, that is called, it is also called nature inspired optimization algorithm, right? You will see so many books even on this particular topic, that is the nature inspired optimization algorithms, and some examples of these are the genetic algorithms and ant colony optimization, right? थोड़ा बहुत आइडिया आई थिंक आपको इसका होगा. देन नॉन नेचर जो होता है, which is not directly related with the nature. So one category is the taboo search. If time permits, I will tell you about the basics, brief idea of the taboo search. Then the next part is iterative local search, right? So this is the category based on the inspiration, right? Then the second kind of the classification of the meta-heuristics algorithms are, it will be either single objective or multi-objective. Multi-objective को dynamic objective भी बोलते हैं, right? So it will be either single objective or multi-objective. If you can consider the example of that, those taboo search will provide you the static objective or single objective in this solution, and then iterative local search is there. And for dynamic objective or multi-objective, the guided local search will be the best optimization for that, right? Then the third category is basically depends upon the memory, right? Whether they remember it or not. If they remember, we can utilize it for the future, right? If they don't remember, then we directly proceed for that. So the I mean directly or indirectly, it depends upon the memory which is available. So if we are using the memory part, then it will affect the future of the solution. And if the memory less option is there, then it the output or the result does not depend upon the past. So that's what the relation between the memory and memoryless. So using memory, the first example is again taboo search, and second one is the ant colony optimization. It considers the memory part of that. How it will do that, that needs to be see. But if you are talking about the memoryless optimization, then simulated annealing is there. GRASP, GRASP algorithm is there. I'll tell you the full form of that. And then most non-linear p-type hard optimization or local optimization algorithms will work as a memoryless optimization problems. So the memory can be a short term or long term. That is important. Again, it depends upon what kind of problems you are having. Then the fourth classification depends upon the neighborhood of the solution, because the
what kind of solution space you are considering, and in that solution space, how many number of solutions are available, and how many neighborhood are available. Again, it will create a category of the meta heuristics optimization. So it is possible that it is having one neighborhood, right, or multiple neighborhood, and most of the algorithms will work on the one neighborhood, and for multiple neighborhood, the variable neighborhood search is an algorithm which will work on the multiple neighborhoods. So these are some classifications of the meta heuristics algorithms. This is the fifth category just we discussed, that is about the trajectory methods, right? We will discuss in detail what you mean by the trajectory and population based method. So the single or trajectory based methods, the examples are taboo search, simulated annealing, iterative local search. These all comes under the category of trajectory methods. When we are talking about the population based method, if you remember what we discussed in the population based method, you are having some solutions and you evolve the next one on the basis of the neighborhood, and accordingly you will get the best solution for that, right? So again and again in the different steps, in the different iteration, you are modifying the current solution, and finally you will get the best solution. So the example of these population based methods are genetic algorithms, ant colony optimization, adaptive memory programming, and so many different algorithms are there, right? So this is the fifth classification. Now let's talk about what do you mean by the trajectory methods in the meta heuristics, right? So ये trajectory आपको यहाँ से देख के समझ में आ रहा होगा. It is having some kind of memory, right? And this is the initial solution, right? And it will generate some candidates, right? And these are the candidate solution. In candidate solution में से again some solutions will be selected. Again it will come back to the initial and फिर again. So ये that overall process जो है ये इस तरीके से continuously चलता रहता है. So that is called the trajectory based methods, right? And what about the population based methods? So population based methods में initially it is having some solution, right? It will generate the population, right? It will go here. It is basically based on the memory. मतलब इसको पहले से पता होता है कि क्या क्या मेरे पास है, राइट? और उस मेमोरी को कंपेयर करके इट विल जनरेट सम पॉपुलेशन. उन पॉपुलेशंस को वी विल कंसिडर एज अ सॉल्यूशन स्पेस. उन सॉल्यूशन स्पेस में से विल कंसिडर वन सॉल्यूशन एंड that will replace that initial population here. Again it will go here, and that overall iterative process will go on, right? So that's what the basic difference between the trajectory based meta heuristics algorithms and population based meta heuristics, or it is also called, the trajectory is also called S meta heuristics and population is called P meta heuristics. इसको मैं ज़्यादा डिटेल में अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करता आपसे. Yes, so what are the different algorithms available if we are considering with respect to the years for the trajectory based methods, right? So trajectory based methods में the basic local search algorithms, it was developed, you can see, in the year of 3192 BC before Christ. उसके बाद फिर आया simulated annealing 83 में, very old one. 86 में आया taboo search, then grasp came at 89, then guided local search algorithm came at 97. उसके बाद आया neighborhood search 99 में, then iterative local search 99 में, and if you consider from 99 to 2020 बहुत सारे different algorithms आपको literature में देखने को मिल जाएंगे with respect to the S meta heuristics algorithms, right? So what do you mean by the basic local search algorithm? It is the you can say the very simple one
कहाँ से स्टार्ट हुआ था। सो इसका जो स्यूडो कोड होता है वो कैसे लिखते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए कि S जो है इट विल जनरेट अ इनिशियल सॉल्यूशन, ठीक है, और इनिशियल सॉल्यूशन जनरेट करने के बाद कंटिन्यूअसली इट विल जनरेट सम सॉल्यूशन स्पेस अगेन एंड अगेन, ये जो रिपीट लिखा हुआ है, रिपीट के बाद फिर देन इट विल इम्प्रूव। ये NS जो है इट इज द NS द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन स्पेस, जो कंप्लीट सॉल्यूशन स्पेस है उसको इम्प्रूव करता है, और उसके बाद फिर जब तक फर्दर इम्प्रूवमेंट इज नॉट पॉसिबल तब तक ये कंटिन्यूअसली इसको इम्प्रूव करता रहता है, राइट। सो इट इज बेसिकली अ इटरेटिव इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। तो सपोज आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो 0 के आसपास होना चाहिए। सपोज आप किसी सिस्टम पे एरर की बात करते हैं, राइट। सो एरर जो है यू आर एक्सपेक्टिंग कि इट शुड बी इक्वल टू 0। तो अब एरर 0 कैसे होगा, पहले आपने स्टार्ट किया सर्च करना, तो पहले वो 10 पे आया, देन इट विल कम टू 8, देन 6, देन 4, देन फिर यहाँ, ऐसा करते 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 फाइनली हियर यू आर गेटिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। मतलब एट दी सपोज ये आपका इटरेशन है, ठीक है, और ये आपका जो है वो एरर वैल्यू है। सो ये इटरेशन और एरर वैल्यू के बीच में अगर ग्राफ है तो आप समझिए कि 9 इटरेशन के बाद अप्रोक्सीमेटली यू आर गेटिंग दी मिनिमम वैल्यू ऑफ एरर, राइट। तो यहाँ पर आके आपको जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है वो फिक्स करना है। तो दैट्स काइंड ऑफ सर्च इज कॉल्ड दी बेसिक लोकल सर्च, ओके। तो इस तरीके से आप देखिए। उसके बाद फिर इस पे नहीं आता मैं, यस, इंटेंसिफाई एंड डाइवर्सिफाई, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, these are the two different and important terms in terms of the optimization algorithms। और ये मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी होते ही बेसिकली, तो ये डिक्शनरी में अगर आप इसका डेफिनेशन देखोगे, so what is the meaning of intensification and diversification? So intensification का मतलब होता है to become stronger or more extreme, to become more intense, right? और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है टू चेंज समथिंग सो दैट इट हैज मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल और थिंग्स। मतलब कि अगर किसी चीज को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करके स्ट्रांग बनाना है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिफिकेशन, और दूसरा किसी चीज को कंटिन्यूअसली चेंज करना है आपको सो दैट कि आप बाकी सबसे कंपेयर कर सको, देन इट इज कॉल्ड द डाइवर्सिफिकेशन। सो इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन और मेटा ह्यूरिस्टिक्स, इट नीड्स बोथ, राइट। सो और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जिसके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, राइट। सो दैट्स व्हाट द इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इज। ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपसे डिस्कस करता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय द टाबू सर्च, राइट। टाबू सर्च एल्गोरिथम्स जो है इट्स वेरी पॉपुलर इन the optimization, or it is the old one, and in literature you will see different variants of the taboo search algorithms. So taboo search में taboo का जो meaning होता है, what you will find in the dictionary, it is called prohibited, disallowed or forbidden, right? So इंग्लिश में और ये बाकी अदर जगह पे जो है अल्टीमेटली इसका मतलब होता है प्रोहिबिटेड, या फिर जिसको आप अलाउ नहीं करते, ठीक है। सो ये है उसका स्यूडो कोड, दैट इज द स्यूडो कोड फॉर टाबू सर्च। इसमें आप क्या कर रहे हैं, सी ये स्यूडो कोड और जो आपने भी लोकल ऑप्टिमा सर्च वाला जो कोड देखा वो ऑलमोस्ट देखने में एक तरीके से सिमिलर ही दिखेगा। हर एक में आप क्या करते हो, इनिशियली एक इनिशियल सॉल्यूशन जनरेट करते हैं, सॉल्यूशन या जो भी है, उसके बाद एक कंडीशन लगाते हैं, राइट। इस कंडीशन जब तक कि ये वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक आप टर्मिनेट नहीं करते हैं प्रोग्राम, राइट। और उसके बाद फिर दैट इज कॉल्ड दी हाउ मच इटरेशन, हाउ मेनी इटरेशन यू वांट टू पुट फॉर स्टॉपिंग क्राइटेरिया। और उसके बाद फिर इन दैट पर्टिकुलर लूप व्हाट यू नीड टू डू, जो भी आपका टोटल सॉल्यूशन स्पेस है और जो आपके टाबू लिस्ट में जितना सॉल्यूशन है उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको आपको कंटिन्यूअसली हर एक इटरेशन में सर्च करना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाबू लिस्ट को आपको अपडेट करना है,
टाबू लिस्ट बेसिकली क्या है यहाँ पर, ये नीचे में आपको समझ में आएगा। टाबू लिस्ट में सबसे पहले तो ये डिस्क्रीट प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। दूसरा, द टाबू लिस्ट कंस्टिट्यूट द शॉर्ट टर्म मेमोरी, राइट, एंड दिस टाबू लिस्ट इज बेसिकली इज फाइनाइट। और इसमें करते क्या है कि टाबू लिस्ट में आप वो कंस्ट्रेंट्स या वो वैल्यू देते हो कि जो आपके सॉल्यूशन में नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड नॉट अलाउड और फॉरबिडन, राइट। तो वो सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स वो टाबू लिस्ट से चेक करता है, और चेक करने के बाद उसको एक्सक्लूड करता है, एंड इट विल गिव यू द बेस्ट सॉल्यूशन, राइट। सो दैट्स व्हाट द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द टाबू सर्च। ये कुछ एग्जाम्पल है, इट विल टेक टाइम, ये मैं नहीं बता रहा आपको अभी टाबू सर्च का क्या है। From here directly I'll come to, just give me a minute, to the one of the most common nature inspired algorithms. Just give me a minute. Then I'll come back to this. Right. So I gave you some brief idea about the different kind of meta heuristics algorithms, how to choose the different variables, different parameters, how to apply, what to apply and all. Now just I give you the basic essence of the one of the algorithm that is called the taboo search. Just brief idea about the taboo search कि वो क्या होता है और कैसे काम करता है. Fine. Now here I am going to tell about some of the nature inspired algorithms. 3 algorithms I have chosen that I am going to discuss with you one by one, and after that finally I'll tell you how to convert that kind of optimization problem for your work, right? How to do and what to do. Fine. So the topic or the title of this particular talk is intelligent meta heuristics optimization algorithms. Fine. So the first algorithm which we are going to discuss here is the firefly algorithms. You will see so many literature on that. Firefly को हम लोग हिंदी में जो है वो जुगनू बोलते हैं, ठीक है. So again it comes under the category of nature inspired meta heuristics algorithms. Just note it down somewhere. Nature inspired meta heuristics algorithms. So this firefly algorithms comes in this category. What it will do and what is the the basic fundamentals of the firefly algorithms. मोस्टली ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉमन देखने को मिलेंगी, राइट. हर एक में एक इनिशियल पॉपुलेशन या सॉल्यूशन जनरेट होता है, उसके बाद फिर एक जगह उसको या तो आप मेमोरी में रखते हो या नहीं रखते हो, देन यू विल अगेन मॉडिफाई इट, इम्प्रूव इट, एंड फाइनली यू विल गेट द फाइनल सॉल्यूशन. दैट्स व्हाट द बेसिक फंडामेंटल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इज. यहाँ पर फायरफ्लाई को उस लॉजिक से कैसे रिलेट करेंगे, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके. So firefly are the most charismatic species among the insects. आपको पता ही है जुगनू जो है वो काफी इंटरेस्टिंग और दिखने में भी काफी एक डिफरेंट होता है. And their spectacular displays have inspired the poets, writers and scientists. आप देखिए बहुत सारे पोएम्स में या बहुत सारे साइंटिस्ट के वर्क में आपको ये जो फायरफ्लाई का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कनेक्शन दिखेगा.
what is the speciality in these fireflies are they produce this short rhythmic pattern of the flashing light, and these patterns of the flashes are unique in the species to species. मतलब कि जो जुगनू आप देखते हो रात में वो बड़ा एक फ्लैशिंग लाइट जनरेट करता है, एंड दैट फ्लैशिंग लाइट का जो कलर होता है या जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो अलग अलग टाइप के जुगनू में अलग अलग होती है. कोई रेड कलर की लाइट जनरेट करता है, कोई येलो करता है, कोई ग्रीन करता है, कोई ब्लू करता है, और हर एक की अलग अलग होती है. इंटेंसिटी भी अलग होती है, लाइट का कलर भी अलग होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी भी अलग होती है. एंड दैट फ्लैशिंग लाइट बेसिकली जो जनरेट होता है इट इज बिकॉज ऑफ द बायोल्यूमिनेंस प्रोसेस. ओके, सो ये एक जनरल आइडिया था कि जो फायरफ्लाइज जो ये लाइट जनरेट करते हैं उसको हम ऑप्टिमाइजेशन पे कैसे यूज करते हैं. सो इन द ईयर ऑफ 2007 वन साइंटिस्ट जिन शी यांग he has developed that particular algorithms which is basically based on the flashing pattern and behavior of the firefly. उसका जो फ्लैशिंग पैटर्न है और फायरफ्लाइज कैसे बिहेव करती हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. It depends upon that only, right? So on the basis of the flashing pattern and the behavior, what we need to do, we need to associate the objective function, right, with the flashing light or the light intensity that helps the fireflies to move to the brighter and more attractive location to achieve the optimal solution. मतलब ये है कि एक फायरफ्लाई जो है वो दूसरे फायरफ्लाई से तभी अट्रैक्ट होता है when the other firefly is having the more brighter light intensity. मतलब कि एक फायरफ्लाई का जो लाइट इंटेंसिटी है वो ये देखता है कि आसपास में मेरे से ज्यादा किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, एंड इट विल शिफ्ट इनटू दैट प्लेस. सो दैट्स व्हाट द बिहेवियर the firefly follows, and that behavior and that particular condition or that particular flashing pattern will be connected with the objective function of the optimization, and it will give you the solution. How it will give you that we'll see, right? So firefly algorithm का basically structure कैसा होता है? So firefly algorithm basically works on 3 different rules, right? या आप इसको assumption भी बोल सकते हो. So it works on the 3 different rules which defines the characteristics of the firefly. Just focus on this. What do you mean by these 3 different rules? Number 1, all fireflies are unisex and they move towards the more attractive and brighter one irrespective of their sex, right? मतलब कि वो किसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो जिनकी की ब्राइटनेस या लाइट इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है, तो वहां पर वो मूव करता है. सो दैट इज द फर्स्ट रूल और फर्स्ट कंडीशन. दूसरा, द लेवल ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द फायरफ्लाई इज प्रोपोर्शनल टू द ब्राइटनेस विच रिड्यूसेस विथ इंक्रीज इन द डिस्टेंस. मतलब कि 2 फायरफ्लाई हैं, ठीक है, अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बिकॉज डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा होगा तो इसको जो है वो ब्राइटनेस कम मिलेगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो इसको ब्राइटनेस ज्यादा मिलेगी, राइट? सो यही यहाँ पर बोल रहा है कि डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो लाइट की इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस होगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी. सो इफ देयर इज नो अदर अट्रैक्टिव फायरफ्लाई देन अ पर्टिकुलर वन, then it will move randomly. जो उसको सबसे ज्यादा लाइट इंटेंसिटी वाला फायरफ्लाई आसपास में दिखेगा वो वहां पर मूव करेगा, ठीक है? सो दैट इज द सेकेंड रूल ऑफ द फायरफ्लाई. देन द थर्ड वन is directly related with the brightness or light intensity. It is determined by the value of the objective function of a given problem, and it is proportional to the light intensity for a maximization problem. मतलब ये है कि अगर आप किसी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में 2 टाइप का चीज लेके चलते हैं, इधर या किसी को मिनिमाइज करते हैं या मैक्सिमाइज करते हैं,
तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में अगर आपको किसी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, देन यू नीड टू कनेक्ट इट विद द ब्राइटनेस और लाइट इंटेंसिटी ऑफ द फायरफ्लाई, राइट. सो दैट इज द ब्रीफ आइडिया कि फायरफ्लाई एल्गोरिथम जो है वो काम कैसे करता है. तो तीन चीज हो गई. पहला तो ये, जो ज्यादा ब्राइटर होगा वो वहां पर मूव करेगा. दूसरा, उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल डिसाइड कि उसका लेवल ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, राइट. और थर्ड चीज जो है कि उसका जो लाइट इंटेंसिटी है, अगर आपको किसी पैरामीटर को, किसी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, देन यू कैन कनेक्ट इट विद द लाइट इंटेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो ये तीन चीजों के बेसिस पे ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द फायरफ्लाई एल्गोरिथम विल बी डिसाइडेड. सो ये कुछ, अब जहां पर भी आप ऑप्टिमाइजेशन पे जाओगे तो वहां पर आपको हर एक चीज को कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट. क्योंकि जब आप जो उसका स्यूडो कोड या एल्गोरिथम जब आप लगाओगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स पार्ट तो देना पड़ेगा. तो हर एक एल्गोरिथम में आपको कुछ ना कुछ मैथमेटिकल पार्ट ऐसा मिलेगा. तो यहाँ पर हम कौन कौन से अलग अलग पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फायरफ्लाई एल्गोरिथम्स. सो नंबर 1 is called the attractiveness, right. So attractiveness जो है वो किस पर डिपेंड करता है, लाइट इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उस पर्टिकुलर फायरफ्लाई की तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, राइट. और डिस्टेंस जब उसके बीच में बढ़ेगा तो अट्रैक्शन, लेवल ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा और ब्राइटनेस भी रिड्यूस होगा. सो दैट थिंग विल बी एक्सप्लेन्ड और फॉर्मुलेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन IR जो है दैट इज कॉल्ड द लाइट इंटेंसिटी. और इस लाइट इंटेंसिटी में ये जो R वाली टर्म है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फायरफ्लाइज. सो दैट इज द एक्सप्रेशन. ये एक फायरफ्लाई के R डिस्टेंस पे कितनी लाइट इंटेंसिटी उसको दिखेगी, ये वो है. और ये दूसरा वाला जो I0 है दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द नेक्स्ट फायरफ्लाई, जिसको कि आप इनिशियल या जीरोथ कंडीशन पे कंसिडर करते हैं, राइट. And here the second term, which is called attractiveness, beta is there, और beta will be defined by this term, right. Beta naught जो है वो maximum attractiveness है. Similarly ये I naught जो है वो maximum intensity है. So ये दो term I और beta that will define the intensity and attractiveness of the firefly. तो ये एक term आपका यहाँ से हुआ. दूसरा है distance, दो फायरफ्लाई के बीच का डिस्टेंस. तो सपोज अगर एक फायरफ्लाई आई पोजीशन पे है, दूसरा फायरफ्लाई जेथ पोजीशन पे है, सो उसकी पोजीशन को आप पी आई और पी जे से डिफाइन करते हो. सो पी आई को अगर पी जे से आप माइनस करते हो, दैट विल गिव यू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फायरफ्लाइज एंड इट विल बी एक्सप्रेस्ड बाय दिस एक्सप्रेशन, राइट. एंड डी इज द डिस्टेंस, सॉरी डी इज द टोटल नंबर ऑफ डायमेंशन, कितने डायमेंशंस लेके चल रहा है, ठीक है. तो ये हुआ. देन थर्ड पैरामीटर्स और वेरिएबल दैट यू नीड टू डिफाइन इज द मूवमेंट, राइट. मूवमेंट का मतलब ये है कि एक फायरफ्लाई दूसरे फायरफ्लाई की तरफ जो कि ज़्यादा इंटेंसिटी वाला है मूव करेगा. सो उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, वी नीड टू डिफाइन इट विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द फायरफ्लाई, राइट. सो ये पी आई जो है, करंट पी आई और पी आई और पी जे के बीच का जो भी रिलेशन है और उसका जो भी इंटेंसिटी है उसके साथ फॉर्मुलेट करके यू विल गेट दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन एंड इट विल मूव इनटू दैट पर्टिकुलर पोजीशन, राइट. सो व्हाट इट सेज दैट वेयर द फर्स्ट टर्म इज द करंट पोजीशन ऑफ द फायरफ्लाई, ये वाला जो है ये करंट पोजीशन है, ठीक है. दूसरा सेकेंड टर्म जो है दैट इज द अट्रैक्टिवनेस बीटा, अभी जस्ट हमने बताया मैक्सिमम बीटा नॉट इज द मैक्सिमम अट्रैक्टिवनेस. एंड द लास्ट टर्म जो है दैट इज द रैंडम मूवमेंट, ये अल्फा जो है दैट विल डिफाइन द रैंडम मूवमेंट. और मोस्टली अल्फा की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होती है और बीटा की वैल्यू जो है वो 1 के बीच में होती है. और गामा, यहाँ पर एक वर्ड आया है आपका ये वाला, ये गामा की वैल्यू 0.1 से 10 के बीच में होती है. तो जब भी आप कोई भी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स लगाते हो, सो आप सिमुलेशन पैरामीटर्स लेके चलते हो. वो सारे सिमुलेशन पैरामीटर की रेंज आपको कहाँ से कहाँ के बीच में लेनी है, ये तीन टर्म आपको यहाँ से यहाँ डिफाइन करना. बीटा नॉट मोस्टली 1 होता है, बट आपको देखना पड़ेगा 1 से नीचे 0.5 में क्या देता है, 1 से ऊपर 10 में क्या देता है. उसके बाद फिर गामा की वैल्यू 0.1 से लेकर 10 के बीच में क्या अलग अलग आउटपुट देता है आपको. और अल्फा जो है वो 0 से 1 के बीच में आपको क्या क्या वैल्यू देता है. तो ये सारे टर्म्स आपको जो भी
सिमुलेशन पैरामीटर वाला पार्ट है, देयर you need to define that, right? Then here comes the it's called flow chart of the Firefly algorithms. जहाँ पर भी आप पेपर के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिक फंडामेंटल्स आपको जो भी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स लगाते हैं वो सारा आपको पेपर में देना होता है, राइट? इंक्लूडिंग द फ्लो चार्ट, इंक्लूडिंग द मैथमेटिकल पार्ट एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। इतनी चीजें आपको ब्रीफली बतानी होती है। तो फायरफ्लाई एल्गोरिथम्स में फ्लो चार्ट में आप कैसे बताते हैं कि आपका जो पहला वाला प्रोसेस होता है दैट इज स्टार्ट हुआ आपका एल्गोरिथम। सबसे पहले आप एक फायरफ्लाई का इनिशियल पॉपुलेशन जनरेट करते हैं, सपोज 10 नंबर ऑफ फायरफ्लाई है। अब 10 नंबर ऑफ फायरफ्लाई है तो उन सारे फायरफ्लाई का फिटनेस जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से डिफाइन करता है। फिटनेस का मतलब ये है कि कितने फायरफ्लाई है जो वर्किंग है और सारे के सारे कुछ ना कुछ पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी जनरेट कर रहे हैं। अब सारी की लाइट इंटेंसिटी जो है वो मेमोरी में अपडेट करते हैं फिटनेस वैल्यू। उसके बाद फिर रैंक दी फायरफ्लाईज। फायरफ्लाई को रैंक कैसे करेंगे? जो सबसे ज्यादा ब्राइटर होगा, मतलब कि जिसका लाइट इंटेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा हाई होगी, राइट, दैट विल बी ऑन द टॉप पोजीशन, और जिसकी लाइट इंटेंसिटी सबसे कम होगी वो सबसे नीचे होगा। उसके बाद फिर ये करने के बाद फिर आप चेक करते हो इसको अगेन कि कौन से दो फायरफ्लाई जो हैं उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, और इनिशियल जो फायरफ्लाई आपने लिया था और अदर जो फायरफ्लाई है उसमें किसका ब्राइटनेस ज़्यादा है और किसकी लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है। एंड अगेन फाइनली ये कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जब तक कि आपको ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिल जाता। सो दैट्स व्हाट द ब्रीफ ऑफ द फायरफ्लाई एल्गोरिथम्स। इस तरीके से ये ओवरऑल फायरफ्लाई एल्गोरिथम जो है वो काम करता है, फाइन। देन द नेक्स्ट एल्गोरिथम्स व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज द ककू सर्च एल्गोरिथम्स। ककू जो होता है वो आप कोयल को बोलते हो, राइट? सो जैसा मैंने आपको बार बार बोला कि ये नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिथम्स की कैटेगरी में आता है, और हर एक का जो आप स्पेसिफिकेशंस या उसका जो एक बेसिक फंडामेंटल्स डिफाइन करते हो, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसे फायरफ्लाई में आपने देखा कि सो मेनी फायरफ्लाईज आर देयर, वो जो ब्राइटर फायरफ्लाई होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, it is quite interesting when you will study all this thing. So cuckoo search algorithms में from where we'll start, what is the basic fundamentals? So cuckoos are the fascinating birds, not only because of the beautiful sounds they can make. आपने सुना है कोयल की आवाज कितनी बढ़िया होती है मॉर्निंग में, but because of their aggressive reproduction strategies, राइट? ये यहाँ पर जो हम लोग जो इसका एक पर्टिकुलर यूज केसेस लेंगे या पर्टिकुलर एप्लीकेशन लेंगे, दैट इज द रिप्रोडक्शन स्ट्रेटेजी ऑफ द कक्कू, ठीक है? एंड कक्कू सर्च इज द heuristic search algorithms which is basically based on the cuckoo's bird behavior, or it was developed in the year of 2009. 10-11 साल पहले का ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है, और लिटरेचर में भी आपको बहुत सारे काम इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक? सो इन द रिस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन स्ट्रेटेजीज ऑफ द ककूज, व्हाट इज द थिंग दैट वी नीड टू कंसिडर इन दिस ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स? So it says that cuckoo search is the very new population heuristics algorithms for global optimization, and it is inspired by the reproduction strategies at the most basic level. अब यहाँ से आप देखिए, ये important है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। At the most basic level, if the host bird discovers the eggs are not their own, it will either throw these aliens eggs away or simply abandon in its nest and build a new nest elsewhere. मतलब क्या है कि जो होस्ट बर्ड है, मतलब कि एक कक्कू है और उसके पास एक नेस्ट है, सो अगर वो देखता है कि वहां पर कुछ एग्स हैं और उसको लगता है कि ये उसके एग नहीं है, राइट, तो वो
क्या करता है कि उसको फेंक देता है, इधर इट विल थ्रो इट, ठीक है, और उसके बाद उस जो पर्टिकुलर नेस्ट है उसको बंद कर देता है और दूसरी जगह कोई दूसरा नेस्ट बना लेता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है उसका कि कैसे आप ये जो लॉजिक है कक्कूस का, इसको आप अप्लाई करोगे ऑप्टिमाइजेशन पे, ठीक है। So it says that the recent studies shows that the cuckoo search is potentially far more efficient than the particle swarm optimization and genetic algorithms. पहले आपके लेक्चर्स में मैंने देखा है कि पार्टिकल स्वॉर्म और शायद जेनेटिक वगैरह जो है वो किसी लेवल पे कवर हुआ है। सो जो कक्कू सर्च है, अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको कंपेयर करते हो पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन से, then it will give the better results as compared to the particle swarm optimization. So ये चीज जो है that is most important. Then again structure कैसा होता है कक्कू सर्च algorithms का, right? So कक्कू सर्च algorithms again it will work on the 3 different rules. कौन कौन से रूल होते हैं? सबसे पहला वाला जो रूल है, it says that each cuckoo lays 1 egg, ठीक है। तो हर एक कक्कू जो है वो एक एग रखता है, और अगर आप ऑप्टिमाइजेशन के टर्म्स में बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ द सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट्स, जो सॉल्यूशन स्पेस की बात करते हैं, और एट अ टाइम एंड डम्प्स इट इन अ रैंडम नेस्ट, मतलब कि वो जो एग उसका होता है वो किसी भी रैंडम नेस्ट पे उसको रख देता है, राइट। इट्स नॉट अबाउट कि जिस नेस्ट पे वो रहता है वहीं उसको रखेगा, वो देखता है जहां पर भी उसको कोई भी खाली या ऐसा अवेलेबल नेस्ट दिखता है, इट विल पुट दैट पर्टिकुलर एग इनटू द नेस्ट, राइट। देन द सेकंड रूल सेज दैट अ फ्रैक्शन ऑफ नेस्ट containing the best eggs which constitutes the possible solution will carry over to the next generation। मतलब कि जो नेस्ट होते हैं जिसमें कि जो एग्स अवेलेबल है और जो एग्स आर दैट विल जनरेट मोर कक्कूज, सो इट विल गिव यू दी सॉल्यूशंस, और इसको ही हम कंसिडर करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। एंड द थर्ड पार्ट सेज दैट द नंबर ऑफ नेस्ट इज फिक्स्ड एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ होस्ट कैन डिस्कवर एन एलियन एग। एलियन एग का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने बोला कि ये कहीं पर भी डंप कर देता है, इसको रैंडमली ये कहीं पर भी डंप कर देता है। तो सपोज होस्ट जो है अगर देखता है कि दिस पर्टिकुलर एलियन एग इज अवेलेबल, तो ये क्या करता है कि द होस्ट कैन आइदर discard the egg or the nest results in building a new nest in the new location। या तो वो उसको एग को डिस्कार्ड कर देता है, फेंक देता है, गिरा देता है, या फिर वो उस नेस्ट को बंद कर देता है और किसी दूसरी जगह नई लोकेशन पे जाके नया नेस्ट बना देता है। सो ये जो सारे के सारे 3 रूल्स हैं, दैट रूल्स कैन बी और एक्चुअली इट शुड बी अप्लाइड इन दी कक्कू सर्च एल्गोरिथम्स। सो अगेन यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिकल कुछ फॉर्मुलेशन होना चाहिए, सो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जब आप इसको लिटरेचर में थ्योरी में पढ़ेंगे तो दैट इज कॉल्ड द लेवी फ्लाइट्स, राइट। लेवी फ्लाइट्स जो है ये कक्कूस का रैंडम बिहेवियर डिफाइन करता है। सो नया जो सॉल्यूशन है उसका, ये जो xt+1 है, इट डिपेंड्स अपॉन दीज वैल्यूज, ठीक है। और अल्फा जो है, अल्फा हियर इट डिफाइंस द स्टेप साइज, ठीक, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी स्केल ऑफ द प्रॉब्लम, किस लेवल का प्रॉब्लम है। और अल्फा की वैल्यू यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि सिमुलेशन पैरामीटर में जनरली आपको वैल्यू डिफाइन करना होता है, सो ये जनरली इक्वल टू 1 होता है, ओके। सो बहुत ज़्यादा टेक्निकल पे मैं नहीं जा रहा हूँ, बस जस्ट ब्रीफली आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि ये एक ऐसा एल्गोरिथम है विच वर्क्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स। ये लेवी फ्लाइट भी मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट दिस इज दी फ्लो चार्ट ऑफ द कक्कू सर्च एल्गोरिथम्स, राइट। So this flow chart basically defines how that overall algorithm works. तो सबसे पहले यहाँ से जो है ये स्टार्ट होगा आपका जो प्रोग्राम है ऑप्टिमाइजेशन का, सारे में वही होता है, इनिशियलाइज अ रैंडम पॉपुलेशन। तो आपने एक रैंडम पॉपुलेशन पहले डिफाइन किया, उसके बाद फिर रैंडम एक पर्टिकुलर कक्कू को आपने चूज किया,
फिटनेस जो है वो बताता है कि नंबर ऑफ एग्स, राइट। उसके बाद फिर एक रैंडम नेस्ट सेलेक्ट किया और वहां पर उसको रख दिया। अब चेक किया आपने कि ये जो नेस्ट है और ये जो कक्कू है ये दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट। और अगर मैच करता है, जिस नेस्ट मतलब जिस कक्कूस का नेक्स्ट है, अगर वही नेस्ट में उसी का एग है, देन इट इज द सॉल्यूशन। तो उसको सॉल्यूशन को आपने जो करंट था उसके साथ रिप्लेस किया, और रिप्लेस करने के बाद फिर अगर ये सॉल्यूशन जस्टिफाई नहीं होता है, यस हुआ तो यहाँ पे आया, रिप्लेस किया, और अगर ये जस्टिफाई नहीं होता है तो वापस जाता है, अबैंडन करता है प्रोसेस को, और इट विल गो टू अगेन एंड इट विल अगेन सर्च इट, राइट। और उसके बाद फिर जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको आपको रखता है। दैट इज द स्टॉपिंग क्राइटेरिया, जो बार बार हम लोग बात करते हैं, दैट इज द स्टॉपिंग क्राइटेरिया, राइट। तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया में कितने नंबर ऑफ इटरेशन आपको इसको रखना है, बिकॉज जितने ज्यादा नंबर ऑफ इटरेशन होंगे द प्रोसेसिंग टाइम विल बी हायर, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें कंसिडर करनी है। फाइनली यू विल गेट द बेस्ट सॉल्यूशन एंड योर overall search process will be stop here, right. So that is the brief overview of the Kakku search algorithms. Now here comes the next and very interesting and important harmony search algorithms, right. ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, हार्मोनी सर्च एल्गोरिथम्स। वाई सो? बिकॉज एक तो ये नया एल्गोरिथम है, इसके बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल है, राइट। और मे बी आप जो भी प्रॉब्लम देख रहे हैं, जस्ट सर्च इट, कि अगर आप कोई मेटा ह्यूरिस्टिक्स नेचर इंस्पायर्ड कैटेगरी में कोई एल्गोरिथम्स अगर आप अप्लाई करने वाले हैं, इट मे पॉसिबल दैट फिट्स फॉर योर प्रॉब्लम, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दी हार्मोनी सर्च। हार्मोनी का मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप समझ सकते हैं, इट इज रिलेटेड विद दी म्यूजिक, फाइन। सो ऑब्वियसली म्यूजिक के बेसिस पे कैसे किसी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम को डिफाइन करना है, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, फाइन। सो जस्ट सी द ब्रीफ इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल ऑफ द हार्मोनी सर्च एल्गोरिथम. So that harmony search algorithm is based on the natural musical performance process. Means when a musician searches for the better state of harmony such as during the jazz operation. For example, मतलब क्या है इसका कि म्यूजिक में आप देखेंगे तो बेसिकली टिपिकल 7 वर्ड्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, 7 नहीं शायद ज्यादा है. सो ये जो टर्म्स होते हैं, सारा का सारा जो म्यूजिक है वो इन्हीं वर्ड्स पे डिपेंड करता है, राइट. सो कैसे आप इसको ऑर्गेनाइज करें कि आपको एक मेलोडियस म्यूजिक मिले, राइट. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द सर्च ऑफ द हार्मोनी, राइट. सो दैट जैज इम्प्रोवाइजेशन ट्राइज टू रीच द म्यूजिकली प्लीजिंग द बेस्ट स्टेट ऑफ द हार्मोनी. मतलब कि ऐसा आपको सॉन्ग बने जो कि ये सारे गामा पाधा नीसा के को मिलाकर आपको एक एक प्लीजिंग आपको म्यूजिक सुनाई दे. सो दैट्स व्हाट द थॉट, राइट. सो हाउ टू डू दैट? सो इट्स जस्ट एन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस which seeks to find the best solution. आपको इन सारे वर्ड्स को मिलाकर एक अच्छा म्यूजिक क्रिएट करना है, ओके. सो इसके अब इंडिविजुअल पैरामीटर्स आपको देखने हैं कि हाउ इट विल वर्क. तो द पिच ऑफ द ईच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ दैट म्यूजिक, राइट. एंड इट्स यू कैन कंसिडर इट एज अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, and this objective function is defined by the set of the values assigned to each design variable. तो जो म्यूजिक का पिच है उसको आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, and then the sound for better quality can be improved through the practice by practice, right. तो हर एक इटरेशन में आप चेक करोगे कि जो आपको फाइनली साउंड मिल रहा है इन सब का कॉम्बिनेशन मिलाकर, which one is better, right. So just as the value of better objective function
द इवैल्यूएशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इटरेशन बाय इटरेशन। तो हर एक इटरेशन में जो है हमको उसका इम्प्रूवमेंट देखना है। फाइन। सो अगेन हार्मोनी सर्च भी जो है वो बेसिकली 3 तरीके से या उसके 3 डिफरेंट रूल्स हैं या 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। नंबर 1, प्ले एनी फेमस पीस ऑफ म्यूजिक। जो आपके पास पीस ऑफ म्यूजिक ऑलरेडी अवेलेबल है उसको आप प्ले कीजिए, राइट। और उसके बाद फिर एग्जैक्टली फ्रॉम द मेमोरी, ऑलरेडी जो मेमोरी में है, दैट इज द मेमोरी विथ मेमोरी वाला जो कैटेगरी है वो है। सो आपके पास मेमोरी में कुछ ऑलरेडी म्यूजिक अवेलेबल है, उसको आप प्ले कीजिए जो कि सुनने में काफी अच्छा है, ठीक है। अब देन प्ले दी समथिंग सिमिलर टू दी नोन पीस एंड एडजस्ट द पिच स्लाइटली। आपने उसको प्ले किया, उसके आसपास का कुछ और प्ले कीजिए और पिच को एडजस्ट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एडजस्टमेंट ऑफ द पिच और पिच एडजस्टमेंट। और उसके बाद फिर देन कंपोज द न्यू और रैंडम नोड्स विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द रैंडमाइजेशन। मतलब आपके पास कुछ है, उसको लीजिए, उसके बाद उसके आसपास का कुछ नया जनरेट कीजिए। जैसे वो म्यूजिक डायरेक्टर कॉपी करते हैं ना सॉन्ग्स को, तो यू कैन कंसिडर इट लाइक दैट ओनली कि एक कहीं से आपने कुछ इंग्लिश में सॉन्ग सुना और इंग्लिश में सॉन्ग सुनने के बाद फिर आपने वही थीम लेकर, नॉट एग्जैक्टली दैट, वही थीम लेकर उसके आसपास में आपने अपने म्यूजिक को एडजस्ट किया और उसके बाद फिर फाइनली यू विल गेट अ न्यू सॉन्ग, राइट। बट वो थोड़ा बहुत उससे रिलेवेंट होता है। सो आप इसको उसी तरीके से समझ सकते हैं कि इट इज लाइक दैट ओनली, फाइन। So that is the brief or basic rules for the harmony search algorithm. Then what are the characteristics, right? So the characteristics of harmony search basically defines the generation of the new vector after considering all the existing vectors rather than only 2 vectors as in the genetic algorithms. मतलब आप वहां पर देखिए तो कक्कू सर्च को हमने कंपेयर किया था किसके साथ, पार्टिकल स्वॉर्म के साथ, तो वो इट वाज गिविंग द बेटर रिजल्ट एज कंपेयर टू द पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर ये कह रहा है कि जेनेटिक एल्गोरिथम के कंपेयर में, मतलब आप बोल सकते हैं कि जेनेटिक का एक वेरिएंट तो नहीं, जेनेटिक का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है दैट हार्मोनी सर्च एल्गोरिथम। सो दैट विल गिव यू द बेटर ऑप्शन। देन इंडिपेंडेंट कंसिडरेशन ईच ऑफ द डिसीजन वेरिएबल इन अ वेक्टर। मतलब कि सारे के सारे जो अभी आपने स्टार्टिंग में बताया था कि सारे के सारे जो डिसीजन वेरिएबल है इंडिपेंडेंटली आप उसको एक वेक्टर के फॉर्म में कंसिडर करते हो, सो दैट विल गिव यू द बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन। देन अगर कोई कंटिन्यूअस डिसीजन वेरिएबल है, देन विदाउट एनी लॉस ऑफ प्रिसीजन यू विल गेट द बेस्ट सॉल्यूशन। और उसके बाद फिर इट डज नॉट रिक्वायर द डेसिमल बाइनरी कन्वर्जन और द फिक्स नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स। जैसे कि जेनेटिक एल्गोरिथम्स में आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, हर एक चीज 0 और 1 के बीच में डिफाइन होती है, तो यहाँ पर आपको वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब बेसिकली वी आर कंपेयरिंग कि जीए में क्या क्या प्रॉब्लम है और यहाँ पर हम क्या क्या चीजें इंप्रूव कर रहे हैं। सो दैट इज द फ्लो चार्ट ऑफ द हार्मोनी सर्च एल्गोरिथम। थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने इसको अलग अलग स्टेप वाइज अलग अलग स्लाइड्स में रखा है। सो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन से पैरामीटर्स आपको यहाँ पे डिफाइन करने हैं। नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन डिसीजन वेरिएबल, कितने नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल है। देन एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि पहले आप कोई सॉन्ग प्ले करेंगे, उसके बाद फिर उसके आसपास का कुछ करेंगे, तो जो पहले से सॉन्ग प्ले करेंगे दैट शुड बी अवेलेबल इन हार्मोनी मेमोरी, और उस मेमोरी का साइज आपको डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। कंसिडरेशन रेट शुड आल्सो बी डिफाइंड। उसके बाद यू नीड टू एडजस्ट द पिच, तो दैट इज कॉल्ड द पिच एडजस्टमेंट रेट। बैंडविड्थ ऑफ द बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली टोटल कितना साइज है उसका, दैट इज कॉल्ड द बैंडविड्थ, राइट। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ इटरेशन यू वांट फॉर दैट। तो ये सारे के सारे वैल्यूज जो है वो आपको स्टेप 1 में डिफाइन करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेप 2 में जो है हार्मोनी मेमोरी साइज आपने जितनी ली है, ये HMS, ये इसको 1 से शुरू करेंगे, राइट। जितनी टोटल मेमोरी है 1 से शुरू, मतलब एक सॉन्ग है तो शुरू से लेकर एंड तक, दैट इज कॉल्ड द हार्मोनी मेमोरी साइज। उसके बाद इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आप एक रैंडम सॉल्यूशन वेक्टर जनरेट करेंगे कि ये सॉन्ग चला
तो इसमें इस तरीके का रिदम है उसका, एक रैंडम सॉल्यूशन वेक्टर जनरेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ दैट एफएक्स। ठीक है, अब आएंगे स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करते हैं कि जैसे ही आपको ये फिटनेस फंक्शन मिला, इस फिटनेस फंक्शन को आप आई की वैल्यू 0 से लेकर n तक, मतलब जितने नंबर ऑफ डिसीजंस वेरिएबल है वहां तक इसको रन करते हैं। रन करने के बाद फिर जो आपका रैंडम सॉल्यूशंस यहाँ पर मिल रहा है, उस रैंडम सॉल्यूशन को चेक करते हैं कि जितनी मेमोरी आपके पास अवेलेबल है उस मेमोरी से कम है या ज्यादा है, राइट। और उसके बाद फिर इट साइमल्टेनियसली आप साथ में उसके पिच का एडजस्टमेंट करते हैं। मतलब जो सॉन्ग आपने पहले रन किया और उसके बाद जो उसका कॉपी बना, उसके कॉपी में जो उसकी पिच की वैल्यू है, उसकी पिच की वैल्यू को आप एडजस्ट करके यू विल सी एंड चेक कि ये एक प्लीजेंट म्यूजिक है या नहीं है, राइट। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन स्टेप नंबर 3, राइट। देन स्टेप नंबर 4 में चेक करते हैं कि कौन सा सबसे वर्स्ट है, राइट। जो वर्स्ट है उसको डिस्कार्ड करते हैं और हार्मोनी मेमोरी को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद दैट इज द स्टॉपिंग क्राइटेरिया। ठीक है, अब देखते हैं कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हुआ, कितने नंबर ऑफ इटरेशन हुआ, राइट। और वो फिर सारा कुछ रन करने के बाद फाइनली यू विल गेट द ऑप्टिमम रिजल्ट। So that's what the brief idea of harmony search algorithm. Fine. अब अगेन इसमें कुछ फॉर्मुलेशन आपको रखना पड़ेगा, तो वो फॉर्मूलाज में कौन कौन से वेरिएबल्स या कौन कौन से पैरामीटर्स आपको पुट करने हैं। तो इसमें दो बेसिक पैरामीटर्स है। नंबर 1 इज कॉल्ड पिच एडजस्टमेंट रेट और नंबर 2 is called bandwidth. This is the variant of harmony search algorithm which terms as the improved harmony search algorithms, right? आप अगर लिटरेचर में देखेंगे तो हार्मोनी सर्च या एचएस एल्गोरिथम्स में बहुत सारे पेपर्स हैं, और उसके बाद फिर दूसरा जो वर्जन है जिसमें कि आप ये पिच एडजस्टमेंट रेट और इसकी जो बैंडविड्थ है उसको मॉडिफाई करते हैं। मतलब व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक हार्मोनी सर्च एल्गोरिथम एंड द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ दैट is that the basic search algorithms, basic harmony search algorithms is having the fixed value of PAR, that is pitch adjustment rate and bandwidth, right? तो बेसिक जो हार्मोनी सर्च होता है उसमें इसकी वैल्यू फिक्स होती है PAR और BW की, बट इन इम्प्रूव्ड हार्मोनी सर्च आप इसको भी वेरिएबल रखते हो। कैसे वेरिएबल रखते हो, दैट इज द इक्वेशन। तो जब आप इनको भी ट्यून करते हैं, वहां पर आपने जो है वो जो भी ट्यूनिंग किया था, यहां पर अगर आप इन दो वैल्यू को भी ट्यून करते हो या वेरिएबल रखते हो, then it will give you the better performance as compared to the traditional or simple harmony search algorithm. So that's what the difference between the basic harmony search algorithms and the improved version of the harmony search algorithms. Fine. So these are the same thing कि जो PAR है और जो बैंडविड्थ है उसको हम एडजस्ट करते हैं। So it will give you the better convergence rate and finally it will lead to the optimal solutions. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। Then it is called the improved version of the harmony search algorithms. These are the references I have taken for considering all these things, and that is about the 3 different optimization algorithm. If you are having any questions, you can unmute your mic and please ask. Otherwise मैं इसके आगे फिर जाऊंगा। Any questions from your side? No question. Dear participants, our expert is asking if you have any questions. You can.
if you have any questions, please. So I hope there is no question. Then I am continuing the session with one of the paper of the harmony search algorithms. It is very interesting, and I suggest you to just download the paper from the internet and see. Right. I think okay. So this one is the paper which I was talking about. It is very interesting, and so many things are there. It is the survey paper on the application of the harmony search algorithms. Sir, is it visible now? That screen is visible? Yes, sir. Okay. So that paper basically talks about the survey on the application of different harmony search based algorithms, right? So what are the interesting things that I'm going to discuss? Number one is very interesting and important diagram you can see from these papers. What are the different classification of the meta heuristic based optimization algorithms? मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर फिगर में या एक पर्टिकुलर डायग्राम में you will see so many different meta heuristics optimization algorithms available in the market, right? मैं एक मिनट इसका पेन ऑन कर दूं so that you will be able to see my cursor. Fine. So just see in hello. So just see these meta heuristics algorithms can be divided into so many different categories. Number one is this one is stochastic algorithms, right? Stochastic algorithms में कौन से different category है? For you, just note down these different names at least कि कहाँ पर कौन सा चीज apply हो सकता है, because हमको mostly algorithm का नाम ही पता नहीं होता है कि कहाँ पर हमको क्या अप्लाई करना है. तो जस्ट सी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टोकेस्टिक एल्गोरिथम. स्टोकेस्टिक एल्गोरिथम मतलब कि जहां पर हम रैंडम वेरिएबल यूज करते हैं, विल पिक रैंडम वैल्यूज एंड गो विद दैट. सो रैंडम सर्च इज देयर, adaptive random search is there, stochastic hill climbing algorithms, iterative local search, guided local search, variable neighborhood, then greedy algorithms, scatter search, taboo search. और टाबू सर्च का एक और वेरिएंट है दैट इज कॉल्ड दी रिएक्टिव टाबू सर्च. फाइन. तो ये सारे के सारे एल्गोरिथम्स जो हैं वो आप इसको यहाँ से देख सकते हो. ओके. देन सेकंड वन कैटेगरी इज फिजिक्स रिलेटेड एल्गोरिथम्स. तो ये जो मैंने आपको एक दो नाम बताया, सिमुलेटेड एनीलिंग, देन एक्सटर्नल ऑप्टिमाइजेशन, ये हार्मोनी सर्च की जो हम लोग बात कर रहे थे, इस ये आता है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कल्चरल एंड ऑल. देन सम आर द प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिथम्स, प्रोबेबिलिस्टिक बेस्ड, देन मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, जेनेटिक एल्गोरिथम्स, बेसिक. माइक ऑन है किसी का, प्लीज म्यूट कर दीजिए. किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर दीजिए. I request you, please. If anybody has, please mute your mic, please. उसके बाद ही अपना फर्दर एक्शन होगा सर. लेकिन इसे 15 दिन का टाइम दिया है, कम भी दे सकता है.
Sir, shall I continue? Yes, sir. Just किसी का माइक ऑन है एक्चुअली, मुझे दिख नहीं रहा है। please continue, sir. ओके, सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिथम्स, और इसमें फिर ये अलग अलग कैटेगरी आपको मिलेगा देखने के लिए। देन द इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम्स आर स्वार्म इंटेलिजेंस, स्वार्म इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स। स्वार्म इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स में इनिशियली इट वाज ओनली पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन, राइट? बट after that you will see so many different। अजय सर, डिस्टरबेंस है थोड़ा सा। पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन के साथ you will see so many different categories of optimization। एक होता है आपका river formation dynamics, then ant colony, bee colony। See, दो different categories हैं। Ant colony was the old one optimization, and after that the modification was artificial bee colony। It is somehow related with the ant colony optimization। Bacterial foraging algorithms is also there। देन फायरफ्लाई जो मैंने जस्ट आपसे डिस्कस किया अभी, कुकू सर्च मैंने जो जस्ट आपसे अभी डिस्कस किया, सो ये थोड़ा डिटेल में मैंने आपको बताया, बट सो मेनी एल्गोरिथम्स आर देयर एंड द प्रीवियस स्पीकर्स हैज ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द teaching learning based optimization। JA algorithm is the new one, so you can consider these kind of algorithms because this is the very good survey paper and they talked about so many algorithms, they have different evolutionary algorithms, genetic programming, evolution, differential evolution, these are very common kind of algorithms, right? Immune algorithm, neural algorithms and all। so ये पेपर आप जब देखोगे तो फिर आपको काफी ज्यादा आइडिया होगा कि what are the different algorithms available, right? And one more thing I would like to discuss here with you all was, ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि ये हार्मोनी सर्च में कैसे वो हार्मोनी जो है वो HMCR को कैसे चेंज करते हैं, PAR को कैसे चेंज करते हैं एंड ऑल। ये देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। इट सेज दैट कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें कि आपका ये पर्टिकुलर हार्मोनी सर्च एल्गोरिथम्स जो है वो ऑलरेडी पेपर में अवेलेबल है, लिटरेचर में अवेलेबल। तो इंजीनियरिंग वाला जो एरिया है, इंजीनियरिंग वाला एरिया में 31% टोटल, मतलब हार्मोनी सर्च के जितने टोटल पेपर हैं उसमें 31% आर रिलेटेड विद इंजीनियरिंग एंड इट इज वेरी हाई। आप देखिए, राइट? और उसके अलावा फिर आप देखिए कि अलग अदर रोबोटिक्स में भी 2%, मेडिकल में 3 है, कंट्रोल, पावर, एनर्जी, वाटर, अदर। सो इट मींस दैट कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, मोस्टली जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं, इन दैट एरिया यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स, राइट? तो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट था। एंड आफ्टर दैट ये एक अच्छा था टाइटल कि हार्मोनी सर्च और उसके कितने वेरिएंट्स हैं, उस पे कितने पेपर्स हैं, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पे कितने पेपर्स हैं, और ये उनके रेफरेंस के साथ ये पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। सो यू कैन कंसिडर दिस पेपर, एक जनरलाइज्ड पेपर की मैं बात कर रहा हूँ आपको कि हार्मोनी सर्च नहीं, बाकी बिकॉज मेरा फील्ड यही यही था एंड दैट वाज माय एरिया, सो दैट्स व्हाई आई कंसिडर दिस पेपर। So that was my thought, right? Now I'm going to share with you one of my paper which was published, right? ये मैं आपके साथ just hold it down, something is there. So why I'm going to discuss this with you, because जैसा मैंने आपको बताया कि माई थॉट इज दैट जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आपको कन्वर्ट कैसे करना है अपने वर्क में, फाइन। सो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस पेपर दैट पेपर वाज पब्लिश्ड, आई थिंक, जस्ट होल्ड ऑन, फिर कुछ हो गया इसमें, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज।
So that paper was published in the year of 2017, right? And it is the very famous journal with the impact factor of approximately 2, 1.8 और 1.9 तो के आसपास का है, और ये वाइली में अवेलेबल है, राइट? ओपन एक्सेस जर्नल है, एनीबडी कैन डाउनलोड इट एंड सी इट डायरेक्टली. आपको कोई आईडी और पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको सर्च करने के लिए, फाइन. You can go there and you can see. So that was the paper based on just अभी जो मैंने जितनी चीजें आपको बताई, आप जस्ट उन सारी चीजों को कंबाइंड करके देखिए. What we have used the improved harmony search algorithm for our problem. We are reducing something because ये थोड़ा टेक्निकल है और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है. So मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा कि एक्चुअली करना क्या था इसमें और कैसे हमने उसको ऑप्टिमाइजेशन को कैसे हमने अपने प्रॉब्लम में उसको इनकॉर्पोरेट किया, कैसे हमने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन मॉडिफाई किया उसके हिसाब से, एंड हाउ वी डिड आवर वर्क, राइट. और उसके बाद कैसे हमने फिर पेपर लिखा और फिर कैसे सबमिट किया. सो दैट्स व्हाट माय थॉट, क्योंकि अल्टीमेटली बीइंग एज अ पार्टिसिपेंट व्हाई यू आर हियर, अल्टीमेटली the overall goal or target is to publish some paper in a good journal or conferences. So इतना सारा कुछ वर्क करने के बाद अगर हम उसको अपने जर्नल या कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाते, then it doesn't make any sense. So that's what my thought is, and I started with the brief of the optimization algorithm yesterday. उसके बाद फिर मैंने आपको उसका डिटेल बताया, what are the categories, that is the heuristics, meta heuristics, और meta heuristics में क्या क्या constraints होते हैं, how to apply the meta heuristics algorithms for your problem. ये आज के सवेरे का टॉपिक था. उसके बाद फिर I discussed some nature inspired algorithms, जिसमें कि we started with the Firefly, then Cuckoo search, then harmony search and improved harmony search, right? और improved harmony search में फिर मैंने आपको दिखाया कि कितने सारे उसके variants अवेलेबल है. बीच में एक टर्म आया था hybrid algorithms, तो हाइब्रिड वर्जन भी इम्प्रूव्ड हार्मोनी सर्च के एल्गोरिथम्स अवेलेबल है. मे बी यू विल फाइंड सम जेनेटिक बेस्ड हार्मोनी सर्च एल्गोरिथम्स या हार्मोनी सर्च बेस्ड artificial bee colony algorithm. You will find that kind of algorithms also, that is called the hybrid algorithms, right? So ये सारी की सारी चीजें करने के बाद फिर आप अपने प्रॉब्लम में कैसे उस ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम को अप्लाई कर सकते हैं, how you can optimize that particular parameter for your work. That's what the intention or motivation or objective of this particular session, right? So ये हमारा पेपर था, and what we started as usual. पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी मेरा प्रॉब्लम था, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताऊं. ये जो PAPR वर्ड है, डायरेक्टली यू कैन रिलेट इट विद द पावर टर्म, फाइन. तो आप ऐसा समझिए कि हमको कोई पर्टिकुलर चीज है जिसमें कि पावर को रिड्यूस करना है, ठीक है. आप नॉर्मल समझिए, बैटरी है आपका. ये डायरेक्टली रिलेटेड था 4G नेटवर्क्स जो हम लोग अभी जियो का यूज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ था, दैट OFDM एंड ऑल. तो आप ऐसा समझिए कि आपके मोबाइल की बैटरी है. आप मोबाइल की बैटरी में जो आपके मोबाइल में पावर कंज्यूम हो रहा है, अगर पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा, राइट, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है. तो जो बैटरी आपके पास है 5000 mAh की या 6000 mAh की, अगर पावर कंजम्पशन आप रिड्यूस कर देते हैं तो आपका बैटरी का लाइफ इंक्रीज होगा, ओवरऑल आपका मोबाइल का जो टाइम है वो इंक्रीज होगा. तो वो कैसे करेंगे, तो वो पावर को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, दैट्स व्हाट द ओवरऑल पेपर इज अबाउट, दैट ओनली, राइट. सो पहले हमने तो ये बताया कि जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, थ्योरी में हम स्टार्टिंग में जो बताते हैं यहाँ पर, कि जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है, किस किस लोगों ने क्या क्या काम किया है, ये सारा रेफरेंस उसी में दिया हुआ है कि कौन कौन से लोगों ने क्या क्या काम किया हुआ है. तो आपको थोड़ा ब्रीफ रिव्यू देना पड़ता है, ये सब उसी के बारे में है. उसके बाद भी हमने बताया कि कौन कौन से मैथड है जो कि आपके, देखिए आर्टिफिशियल बी कॉलोनी भी आया है, लोगों ने अप्लाई किया है. फिर और भी कुछ कुछ आपको देखने को मिलेगा. ये देखिए पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन भी दिख रहा है यहाँ पर.
ये सारे मेथड लोगों ने लगाए हुए हैं और प्रपोज किया है और कैसे काम किया है। तो आपके एरिया में देखिए, ये फायरफ्लाई भी दिख रहा है, हार्मोनी सर्च भी दिख रहा है, ये सब कौन कौन से लोगों ने क्या क्या काम किया है और कैसे कैसे वो अभी ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आपको बताना होता है। फिर जो मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन का बात किया था कि जो भी आपका प्रॉब्लम है, जैसे वो पावर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो पावर को आपको पहले थोड़ा सा मैथमेटिक्स के टर्म्स में बताना पड़ेगा, और देन टारगेट आपका क्या है, जो आपका प्रॉब्लम है उसको आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है, दैट वन इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वी नीड टू मिनिमाइज द पावर। ठीक, तो अब जो इम्प्रूव्ड हार्मोनी सर्च एल्गोरिथम जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, उसके लिए सबसे पहले आपको डिफाइन करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसके बाद डिफाइन करना है इधर सब्जेक्ट टू का मतलब क्या है। सब्जेक्ट टू डिफाइंस बेसिकली दी कंस्ट्रेंट्स। तो ये कंस्ट्रेंट डिफाइन करेगा कि किस कंडीशन पर, या आप जो दूसरा एक मैंने आपको बताया था कि एक पेनल्टी फैक्टर भी लेके चलते हैं, तो किस कंडीशन पे ये काम करेगा एंड हाउ इट विल गिव यू द रिजल्ट। तो ये डिफाइन करना आपको जरूरी है। और फिर उसमें कौन कौन सी वैल्यू होगी, दीज आर कॉल्ड द वेरिएबल्स, डिसीजन वेरिएबल्स। तो ये तीन चीज अल्टीमेटली आपका जो काम है और जो इम्प्रूव्ड हार्मोनी सर्च का जो लॉजिक है उसको मैच करने के लिए, उसको रिलेट करने के लिए यू नीड टू वेरी क्लियरली डिफाइन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वही मेन इंपॉर्टेंट टास्क होता है। आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके ऑप्टिमाइजेशन के साथ मैच करता है कि नहीं करता है, वो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैंने आपको बीच में एक जगह और बताया था, यू नीड टू कंपेयर योर वर्क विद द अदर एल्गोरिथम्स आल्सो। तो यहाँ पर हमने इसको फायरफ्लाई के साथ कंपेयर किया हुआ है। देखिए फायरफ्लाई का जो मैंने आपको डिटेल बताया था, तो ये फायरफ्लाई का सारा कुछ दिया है। उसके बाद फिर विल कम टू दी हार्मोनी सर्च एल्गोरिथम्स, कि वो बेसिक जो ओरिजिनल हार्मोनी सर्च एल्गोरिथम्स है वो क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं उसके, हार्मोनी मेमोरी को हम कैसे चेंज करते हैं। ये जो एल्गोरिथम का प्रोग्रामिंग है वो उसका स्यूडो कोड जो बोलते हैं, ये उसका स्यूडो कोड है। ये हाउ इट विल वर्क, जो एक्चुअली मैटलैब में हम प्रोग्राम लिखते हैं, ये उसका स्यूडो कोड है। आप इसको रिलेट कर सकते हो, हार्मोनी सर्च का कोई बेसिक पेपर आप देखोगे उसमें आपको स्यूडो कोड का ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा, लेकिन उसको मॉडिफाई करना होता है हमारे प्रॉब्लम के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने वो जो मैंने आपको पेपर दिखाया वो ये पेपर है कि वेरिएंट्स ऑफ द डिफरेंट हार्मोनी सर्च एल्गोरिथम्स आर अवेलेबल इन द लिटरेचर। देन इम्प्रूव्ड हार्मोनी सर्च और नॉर्मल हार्मोनी सर्च में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया। दो चीज होती है, दो इक्वेशंस जो आए थे यहाँ पर, आई थिंक कहीं पर होगा ये, दो इक्वेशंस थे जो, वो दो इक्वेशन, हाँ ये है आपका पिच एडजस्टमेंट रेट और बैंडविड्थ। ये दो वैल्यूज जो है वो ओरिजिनल वाले में फिक्स होती है, ओरिजिनल जो हार्मोनी सर्च होता है उसमें ये फिक्स होती है। बट अगर आप इसको भी वेरिएबल रखते हो then it will give you the better results, improved version of the result. So that's why that is called the improved harmony search algorithm. So अब improved harmony search algorithm को हम अपने प्रॉब्लम में कैसे डिफाइन करेंगे, that's what the original work of this paper, कि improved harmony search को हम अपने में कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब उसके लिए हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया, जो मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया था, वो फ्लो चार्ट का जो कंटेंट है, हियर वी आर डिफाइन इन द नंबर ऑफ स्टेप्स, पैरामीटर इनिशियलाइज कैसे किया, हार्मोनी मेमोरी कैसे इनिशियलाइज किया। यहाँ पर आपको आपके प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना, नया सॉल्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, मेमोरी कैसे आपने कंसिडर की, राइट। उसके बाद फिर मैथमेटिकली जो भी आप टर्म्स और वैल्यूज लेके चल रहे हो उसके हिसाब से कैसे आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा, और ये उसका एल्गोरिथम है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने पहले मैथमेटिकली जस्टिफाई किया कि ये सब वैल्यू अगर हम लेके चलेंगे देन इट विल गिव दी बेटर रिजल्ट्स और बेटर परफॉर्मेंस, राइट। उसके बाद फिर हम आते हैं कि व्हेन वी आर सिमुलेटिंग इट विथ दी मैटलैब विथ दी डिफरेंट पैरामीटर्स, आई होप कहीं सिमुलेशन पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है, आई होप नहीं किया है, अंदर में कहीं लिखा है। डिफरेंट वैल्यूज जो हम लेके चलते हैं
उन डिफरेंट वैल्यूज को जब हम सिमुलेट करते हैं, ठीक है, फिगर नंबर 2 पे आइए आप, तो यहाँ पर देखिए ये अलग अलग वैल्यूज आपको मिल रही है, ठीक है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि ये जो लोवेस्ट वाली वैल्यू आ रही है ये अच्छा है, और ये ज्यादा जो वैल्यू आ रही है 11-12 के आसपास ये वर्स्ट है, राइट। सो हमने जो ये IHS PTS आपको यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज द इम्प्रूव्ड हार्मोनी सर्च, और ये ब्लू वाली जो वैल्यू है, अलग अलग 3 डिफरेंट कंडीशन ली है, तो ये ब्लू वाला जो है, ये ब्लू वाला ये एक कंडीशन में है, फिर दूसरा यहाँ पर IHS इस कौन सा, एक ग्रीन है ये पहला, दूसरा है ब्लू, और तीसरा है येलो, दिस वन। ये अल्टीमेटली सारे केसेस में इट इज गिविंग दी बेटर परफॉर्मेंस। तो इस तरीके से हमने ये अलग अलग वैल्यूज निकाली है मैटलैब से, और इसको फिर अलग अलग कंडीशंस में हमने इसको जस्टिफाई किया है कि हाउ इट इज गिविंग दी बेटर रिजल्ट्स, ठीक है। और फिर ये उसका एक दूसरा तरीका है रिप्रेजेंट करने का कि सपोज आप कंडीशन अगर चेंज कर रहे हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग कंडीशन में हाउ इट विल गिव यू दी बेटर रिजल्ट्स और बेटर परफॉर्मेंस। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बार बार मैं जो आपको बोल रहा था कि आपको जो भी एल्गोरिथम प्रपोज करना है या जो भी एल्गोरिथम्स आपने सिमुलेट किया हुआ है, you need to explain it with the computational complexity। देखिए, क्योंकि आपका एल्गोरिथम अगर कंप्यूटेशनली एफिशिएंट नहीं है देन इट डजंट मेक एनी सेंस, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो बेटर रिजल्ट दे रहा है, लेकिन अगर नंबर ऑफ कैलकुलेशंस आर लेस तो वो जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। सॉरी, इफ द नंबर ऑफ कैलकुलेशंस आर हाई देन वो जस्टिफाइड नहीं है। सो वो चीज आपको कंसिडर करना पड़ेगा, एंड यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल दैट विथ रिस्पेक्ट टू दी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट, फाइन। सो ये सारा कुछ सिमुलेट करने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद, देन वी कंक्लूडेड विद द फैक्ट कि हमारा जो मेथड है दैट इज दिस वन, राइट, इम्प्रूव्ड हार्मोनी सर्च वाला, उसको हमने कंपेयर किया है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, अलग अलग जो पेपर है, यहाँ रेफरेंस नहीं दिया हुआ, रेफरेंस अंदर में दिया है। ये है आर्टिफिशियल बी कॉलोनी, ये है हार्मोनी सर्च, ये है फायरफ्लाई, ये है टाबू सर्च, राइट। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ये थोड़ा बेसिक है, मतलब ये ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। तो ये हमारा जो मेथड है जिसको कि हमने प्रपोज किया है, उसको हमने 4 डिफरेंट एग्जिस्टिंग पेपर्स के साथ कंपेयर किया कि हमारा जो मेथड है वो 6.7 वैल्यू दे रहा है, नंबर 1, और दूसरा सेम कंडीशन के लिए इसका कॉम्प्लेक्सिटी 160 है, इसका 100 है, इसका 160 है, इसका 100 है, इसका 320 है। तो अलग अलग कंडीशन में ये 160 है विच इज अप्रोक्सीमेटली इन सबके बराबर है, बट इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर ये कम आ रही है। अब आप देखिए फायरफ्लाई के केस में ये 100 है, लेकिन ये 7.8 वैल्यू दे रहा है। इंप्रूव्ड हार्मोनी के केस में ये 160 है, लेकिन ये 6.7 दे रहा है। 6.7 मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना। हमारा टारगेट इस पावर को रिड्यूस करना है। सो 160 कैलकुलेशन के लिए आप रफली ऐसा समझिए कि 160 कैलकुलेशन के लिए ये आपको 6.7 वैल्यू दे रहा है, और ये 100 कैलकुलेशन के लिए आपको 7.8 वैल्यू दे रहा है। तो 100 और 160 में बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर पावर रिडक्शन जो आपका बेसिक टारगेट है वो काफी कम है। कॉम्प्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज्यादा है इसकी, बट रिजल्ट्स के टर्म्स में इट इज गिविंग यू द ऑप्टिमम रिजल्ट जो आपका एक्सपेक्टेशन है, फाइन। सो ये था, उसके बाद हमने इसको कंक्लूड किया, और कंक्लूड करने के बाद फिर ये रेफरेंस था। ये मेरे जो डॉक्टरेट में गाइड थे उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन है, और ये मैं था, राइट। सो अल्टीमेटली मेरा थॉट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि हाउ टू कन्वर्ट द फंडामेंटल्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन फॉर राइटिंग द जर्नल पेपर और कॉन्फ्रेंस पेपर। सो ये जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया ब्रीफली। I'll explain you कि ओवरऑल जो सेशन मुझे अलॉट किया गया था उसमें हमने कहाँ से क्या क्या किया, देन I'll conclude this session here only।
So brief introduction of the optimization algorithms, then different categories of optimization, what are the different terms we are using in the optimization, वो सारी की सारी चीजें हमने कल डिटेल में डिस्कस की थी. And we discussed the types of the optimization, which is called simple optimization, hard optimization, heuristic optimization, and meta heuristics optimization. And in today's session, we started with the meta heuristics optimization algorithms. कि meta heuristics क्यों? What is the need of meta heuristics algorithms? Then we started with that. Then how to apply the meta heuristics algorithms? What are the pros and cons of meta heuristics algorithms? That's what we have seen. Then we have seen the different types of meta heuristics algorithms. अलग अलग कैटेगरी का नेचर इंस्पायर्ड होता है और उसके अलावा और बहुत सारे डिफरेंट कंडीशंस पर डिपेंड करता है. देन वी हैव सीन द ब्रीफ आइडिया ऑफ वन ऑफ द एल्गोरिथम दैट इज कॉल्ड टाबू सर्च. टाबू का मतलब जो है वो होता है रिस्ट्रिक्टेड और फॉरबिडन समथिंग. सो दैट वी डिस्कस्ड इन ब्रीफ. उसके बाद डिटेल में जो थोड़ा मैंने आपको बताया, दीज आर अगेन द 3 डिफरेंट एल्गोरिथम्स. नंबर 1 इज कॉल्ड फायरफ्लाई एल्गोरिथम्स, जो कि फायरफ्लाई की ब्राइटनेस पे बेसिकली डिपेंडेंट होता है. देन सेकेंड वन वाज द ककू सर्च एल्गोरिथम. ककू सर्च वाज द बेसिकली डिपेंड अपॉन द behavior of the reproduction of the egg of the cuckoos. And third one was the harmony search and its variant improved harmony search algorithms. So harmony search में क्या होता है कि you are having the music terms that is called the सा रे गामा, and उसको मिलाकर एक अच्छा pleasant music कैसे create करते हैं. That's what the brief essence of the harmony search algorithms. So उसके बाद फिर harmony search algorithms में when technically we are seeing, then it is having the 2 different parameters that is called the pitch adjustment rate and the bandwidth. That pitch adjustment rate and bandwidth is fixed in case of the simple harmony search algorithms, and when we are considering it as a variable, then it will give you the better performance as compared to the harmony search algorithm. So that's what we discussed in detail with the flow chart, with the mathematical parameters and variables and each and everything. And after that, I saw you one of the paper, what are the different variants of harmony search available in the literature. A very good paper. And after that, finally, we concluded with the fact that how to convert all these learnings, all these takeaways into the publication of the journal paper. So that's what the paper we were discussing from last 15 minutes, कि जो हमने किया उसको कैसे पेपर के फॉर्मेट में लिखें, how to apply that. I have given you my example only. आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, मे बी यू आर फ्रॉम द मैकेनिकल बैकग्राउंड और सिविल और साइंस और इंजीनियरिंग और एनीथिंग. सो हाउ टू अप्लाई all your learnings, all your takeaways into the publication of journal or the conferences. That's what the overall thought. And I think Jay Verma sir and other organizer will, I think appreciate this thing, that the overall organization of these kind of short-term training program is only to convert this thing or these learnings into some results. तो अल्टीमेटली इतने दिनों तक आपके 1 वीक अटेंड करने के पीछे होना ये चाहिए कि आपको अगर आइडिया हो गया है इतनी सारी चीज़ों का, सर जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम इन योर एरिया, राइट. सी द सम्स ऑफ द सर्वे पेपर, see how they have applied some kind of optimization algorithms in your area, and then write some paper, do some simulation, discuss with your seniors and other faculty members, colleagues, and publish it, right. It will take some time, but yes, you need to do that. That's what the overall outcome of this thing. So from my side, thank you so much for attending this session. And it has been told to me that I need to finish it by 1 o'clock. So it's 12:55 now. So 5 minutes I am
considering for the question and answer sessions, maybe that will be the interactive session. If you want to discuss with me anything, you can discuss. And I'm just unsharing my PPT here. And I am switching on my camera now. I don't know it will work or not. Yeah, I think it is visible. So you can ask anything, you can discuss anything. 5 minutes approximately we are having. If you need to discuss something, anything related to paper publication, conference publication, or optimization, or whatever, anything you want to discuss, you are welcome. Thank you, sir. Thank you, sir, for your informative lecture. Dear participants, our honorable speakers, all our honorable speakers have joined. I request you all, if you have any query, you can ask. If you have Hello, Dr. Mangal. Hello, yes, sir. Hello. सर मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ, जितेंद्र कुमार. या बोलिए जितेंद्र जी, बोलिए प्लीज. सर आप अपनी ईमेल आईडी शेयर कर सकते हो? ईमेल आईडी आप नोट कर 1 मिनट. मैं वर्बली बता देता हूँ आपको, या फिर मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा. 1 minute, sir. We will share the email IDs of our experts in the feedback form, sir. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you. Yes, yes, yes. Thank you, जितेंद्र sir. जी, और कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. आप काफी एक्टिव रहे हैं पूरे सेशन में. जी सर, अब फिलहाल तो अभी नहीं है. मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ. जैसे कोई दिक्कत होगी तो मैं फिर बताऊंगा. Sure. You can contact me anytime. Professor Ajay Verma is having all the information related to me. So आप उनसे contact कर सकते हैं, and through email and call you can contact me. No problem from my side. Sure, sir. Thank you, sir. Anything from any participant? Any questions, any issues, anything you want to discuss? Ajay sir, if you are having any queries, then you can ask also. Okay, sir. You can also send your queries in the chat box. That is also possible. And I request to all participants, please share your experience of these 6 days. Just a request from organizing team also. You may share your experience of this short-term training program, your suggestions, your feedback. We will provide you the feedback form just after the validatory function. We are just approaching in this function, but before that, I request you to all, if you want to say something of this short-term training program on multi-objective optimization methods, please share your use. Please say something. Our honorable speakers have already joined. Our honorable director, sir, of Sri Shankacharya Technical Campus has already joined. I welcome all speakers, sir, directors, sir. जितिन कुमार सर, आप कुछ बोलेंगे सर? हेलो 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 There is only one submission of assignment.
and it is part of the STTP that each and everyone has to submit. In the screen there is Arpit Kaur, Deepal Kumar Patel. If you have something to say, please share your views about this STTP. Then we will start the final session, the concluding session of this STTP. Hello, sir. Yes, please. It is a good experience because I am in the field of mechanical engineering and I am using this kind of different optimization techniques. But maybe I am not going through that detailed things that we can club this different optimization techniques and how you can compare this. That might be discussed in that regarding that SAW techniques and that TOPSIS. The comparison for the same problem that might be very helpful for each one. So thank you for that kind of orientation that will be helpful for the further research work. Thank you, sir, for sharing your experience. We are happy, sir, here to be with our honorable experts, sirs. They all are having much more experience in their research. They all have more than 100 papers in research papers in the field of research in international journals. So definitely they will help you all in future also. Anybody? Please share your views. That will motivate us in future to update or to upgrade, because we are going to organize one FDP on the same topic in the month of December, and I request all you to join. Sir, I have one request regarding this. Yes, sir, please. Sir, right now they are also using some mathematical softwares like MATLAB or Scilab. So if you can incorporate that kind of software to solve this kind of algorithm. We are in position to incorporate this. Yes, sir, definitely will incorporate. So I am very interested for that kind of things. Yes, sir. Sir, we will definitely incorporate your suggestion, sir. MATLAB, Scilab, that will be there in FDP, definitely. Okay, sir. Thank you. Any more suggestions, sir, please? All participants, your feedback is our motivation. We are waiting your response. Anybody have some experience, some? If you do not agree with this, we also welcome that. So, shall we start the final session? So after query and feedback,
I welcome all participants in the validatory function. I welcome, very good afternoon to our Honorable Director, sir. Because of his motivation, we are here to organize the program, and on behalf of Sri Shankaracharya Technical Campus and Department of Mechanical Engineering, I welcome you all on this validatory function. Short-term training program on multi-objective optimization methods applied in the field of engineering and science started on 26th of October 2020, and today is the last day of this short-term training program. Our honorable speakers are, you have just interacted, Dr. Mangal Singh sir, he is from Nirma University, Ahmedabad, and our honorable speakers from IIT RAM Ahmedabad, Dr. Kumar Abhishek sir and Dr. Dilip Gupta sir. We hope that all you enjoyed what they taught, and the way they have explained all basic optimization methods are very interesting, very applicable. They all taught in a very simple manner that you can easily incorporate these methods in your research. This is the platform provided by Sri Shankaracharya Technical Campus, Bhelai. And finally, we hope that you all enjoyed this STTP, and on the basis of your feedback and suggestions, we will definitely incorporate in our future programs. Definitely. And I request all to join in the faculty development program that will be organized by the Department of Mechanical Engineering, Sri Shankaracharya Technical Campus. There will be some problem from network issue, or is there any situations, and that is beyond our control. We are sorry for that, and we will provide all necessary information of our experts so that you can interact them. They are really helping. They are just down to earth people. Such type of association, you will definitely enjoy their So I request our Honorable Director, sir, for his blessings. Hello, very good afternoon to all. Respected our expert speakers, Dr. Kumar Abhishek, Dr. Dilip Gupta from IIT Ahmedabad, Dr. Mangal Singh from Nirma University, Ahmedabad, my all colleagues, Dr. Jay Verma, Mr. Vicky Kumar, and Madam Biba Bandari, Madam Achla Jain, and all other members of this STTP organizing committee. I hope in these 5 days, all the participants have gone through the multi-objective optimization methods used in engineering and scientific research. And I think
all members understood and ready to use in the field as stated in these 5 days. Am I audible? Hello? 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 Yes, sir. Yes, sir. Oh, okay, okay. Yes, sir. Yes, sir. What I have gone through in between these 5 days, some methods which when the session was there, I came across some Tagachi, gray relation, Topsys, Tilbio, other optimization method very well. Our expert members have stated and described, and in the last slide they have given the heuristic to all this compilation, and that has been categorized in number of the probabilistic method and in the evolutionary methods. In fact, in my research, I use that genetic algorithm technique for optimization for my mechanism synthesis for robotic applications. And wonderfully, this optimization nowadays, it is the only solution. The reason is that if I observe in this pandemic COVID-19, every day there was a meeting from the briefing from the ministry, central ministry at 4 p.m. And they stated that this is the data and this data is come and we forecast that in the future how much will be there. If you know and if you go for in that calculation, it is nothing but an optimization for prediction in the future. Okay, these are the data has been the last 5 days, 5, 10 days, 1, 3, 30 days, and what are the variations, what is the exponential and what is the linear relationship or exponential relationship. And according to that, they predict and the decision has been taken how much go for lockdown period. And therefore lockdown 1, 2, 3, then unlock 1, 2, 3, 4, 5 like that. So this is this optimization not only for the engineering and scientific research, it is also helpful in the administrative approach also. At the same time, there are the lot of things are going throughout the world, and particularly there is a fight between a number of countries, Armenia, this and that, and we are seeing on the TVs the fighting is there, fires are there, and the deployment of the troops, the deployment of the guns, aircraft, and so on, so many places. How the decision has been taken. Therefore, we come to the evolution of this optimization method, starting with the operation research. Actually, it has been evolved during the World War II, after the World War II, or during the World War II, where a group of the scientists have met and then they decide how much resources have to be deployed on which front. And from there, the number of techniques have started. And after that, after the World War II, these techniques have been then used for the industrial application for the optimization of the production system and optimization of the sales and marketing. So therefore, these are the very powerful technique. And with the passage of times, number of things have been there, and now artificial intelligence and machine learning, everything is going on. If we know that in the basis of that, all things are an optimization, because it is nothing but a combinations of the variables, how much variables one has to be connected and how they have been integrated with that. Therefore, in the future, when the advent of this AI concept or machine learning concept and data science, definitely this optimization method requires the data. On the basis of data, everything is going, whether it is the industrial application, whether it is the administration, even including the stock market. So I hope these multi-objective optimization methods have the very good future and very good applications in science and engineering applications and other applications. And I hope all participants have understood very well and they are ready to use it. I think it should be used as far as possible. And in the near future, we are also going to conduct one FDP on the same topic. If you want to join or if you want to take the clarity on that further, the sessions can be joined at this. Really, I am thankful to our expert members, Dr. Kumar Abhishek and Dr. Dilip Gupta and Dr. Mangal Singh, for sparing their valuable time and given their efforts for the success of this STTPs. And I hope in future they will also with us. And thanks to all participants, then they have invested their time to understand this optimization method, multi-objective in the field of application, in the field of research areas, whether it's the scientific and the engineering.
Thanks to organizer, all organizers, my colleagues and committees, and thanks to AICT for sponsoring this STTP. Thank you very much. All the best and good luck. Thank you. Thank you, sir. So dear participants, we are sending the feedback form in your mail and in the WhatsApp group also, and we will provide the e-certificate through mail. And if you have any query regarding this STTP, you can send either in the WhatsApp group or in the mail that is already given in the leaflet and program browser. Okay, thank you. So if you'll permit, then we will end the meeting. Thank you, dear participants. Thank you to all participants. Ajay sir? Yes. Please give permission to end the session. Okay. So I think the session is over. We are going to finish, and I request you all to send the feedback form as soon as possible so that we can generate the e-certificate and we are enabled to send. If anyone is not getting the certificate, please inform us. We will send again it. Thank you all, and all the best for your future. Thank you, sir. Yes, Professor Vicky, you can end the meeting. Yes, sir.